welcome back. Is Jojo with Xulfi, the man himself. It's part We are 6. back. आपको याद है कौन सा part? पार्ट 6 है पार्ट 6 है 6 है Part हाँ नहीं 6 बिल्कुल है. ठीक 6 ही है Break हो गया काफी लंबा, है ना? But हाँ हो गया सही कह रहे हो no, it's good. I think बट ठीक है yeah, people got a time to catch up with the first 5 episodes. They were detailed and long, and we got a breather. You've been so busy. He's been crazy busy, I must tell everyone. And congratulations. I saw your post that yes Cook thank you for Pakistan is doing what K-pop did for Korea. I was so happy when I saw that because yes, it took me back to our conversation and I'm like, yes thank you. Thank you for showing us all that it can be done. Just so happy. I've just been thinking it वाकई पता है ख्वाब है तो मुझको ना जगा that's the truth of my life right now Yeah. कि कैसे हो रहा है सारी इंटेंट्स ऐसे नजर आना शुरू हो गई हैं सामने होते हुए कि जो आपने नियत की उसके रिजल्ट्स आपके सामने दिख रहे हैं तो हैरानी भी हो रही है थोड़ा अनबिलीवेबल भी है कि वही बातें वही कॉन्वर्सेशन के पॉप तो आपको याद है वो केस स्टडी थी और नॉट जस्ट म्यूजिक केस स्टडी बट हाउ कल्चर इज एक्सपोर्टेड हाउ यू टॉक टू द वर्ल्ड द कॉन्फिडेंस दैट विद विच यू टॉक टू द वर्ल्ड एंड किस किस रीजन की वजह से यू टॉक टू द वर्ल्ड वो सारा कुछ जब आप आप देखते हो कि अच्छा आपने रिसर्च की समझा आपने मेरी हेल्प की ज्योति उसके बाद से आप मज़ीद अपने मिशन में आगे गए और बैक बैक इन द डे जब ये सारी बातें हो रही थी आपको ये नहीं पता होता कि चीज़ें इस तरह से मैनिफेस्ट हो जाएंगी और वो कुछ कुछ आहिस्ता आहिस्ता करके सब कुछ ही लगता है कि हो रहा है दैट इज़ वाई ऐसे कि मुझे ख्वाब लगता है बट मुझे यकीन और फेथ बहुत बढ़ गया होप बहुत बढ़ गया सो मैं खुश हूँ आई विल बी ऑनेस्ट आई एम हैप्पी एंड I could also sense I just got back from my office. तो वहाँ भी सारे I've realized कि okay, we are also over the moon knowing कि this is happening. So मुझे अच्छा लगा एक the team is happy, we are happy, things are happening, there is hope, things are improving, evolving, growing. बस मैं खुश हूँ. Yeah. I just want to say that, when I saw that post, I just jumped up and I was like, oh my God, because, I, as someone on the other side of the border, I have been very in awe of what you've done with this show and with this brand, and I have, in my own sort of way, been very frustrated about how it gets done on our side. And I have, when I shared that article with you also, it was about how a country can attain more soft power and how it can change the world's perception of it through music. And music is such a strong culture export. But it's not that, it's just because it connects everyone, and that's exactly what you've managed to do. And when I saw you shared that with me, I was in tears because I was like, just something as small as reading something somewhere can sort of ignite this subconscious layer of intent in you that you are not even conscious of on your daily basis when you are going through the motions of creating that thing which you've done. And now, after all the frenzy of season 14 and 15 is kind of, the season is over, and that's all that energy and that frenzy that happens during the season, वो सब अभी settle हो गया है, पर अब आप उसके after effects देख रहे हैं और देखते रहेंगे, because वो इतना लोगों के soul में absorb हो गया है और होता रहेगा. होता रहेगा. yes It's beautiful. वो आफ्टर इफेक्ट्स भी आफ्टर इफेक्ट्स भी ऐसे हैं कि वो बहुत ज्यादा ब्रांचेस हैं. Yes. इम्पैक्ट की ब्रांचेस होप की ब्रांचेस तो वो तो कभी कभी ना मैं थोड़ा कंफ्यूज भी हो जाता हूँ कि सो के उठ के कि आज क्या क्या करना है आज क्या क्या पॉसिबल है आज क्या क्या पॉसिबल है राइट सो एक अजीब सी एक्साइटमेंट एंड समहाउ इस एक्साइटमेंट की वजह से मैंने अपना लाइफ स्केड्यूल भी बेहतर कर लिया. मैं उठ जाता हूँ 7-8 बजे सुबह
because I feel You I get feel more it's time, yes, to feel and understand and yes. converse and communicate with more people. It's just Yeah. beautiful. And you talked about soft power. I think after Pia Pia calling, a global publication है, मैं नाम अभी भूल रहा हूँ, I'll share the link with you. उनका आर्टिकल आया था अबाउट पिया पिया कॉलिंग के और सॉफ्ट पावर को और पाकिस्तान को लेके, I जो think आपने I एग्जैक्ट read बात that. उस I केस read स्टडी it. I think it was Medium, सो wasn't it? Medium. मीडियम भी करता है सॉफ्ट पावर वाली बात. एक और आर्टिकल था, वो किसी कोई अमेरिकन न्यूज़ लेटर है, उसने किया Okay. हुआ था. Okay. सो आई विल शेयर दैट विद यू. बट आई वाज लाइक वो एग्जैक्टली वही वाली बात थी कि ये कितना ज़रूरी है. वही जो Yeah. आपने रिसर्च पेपर भेजा, केस स्टडी, वही वाली बात जो आपने भी की, वो उसमें थी. सो पर आप देखो ना उस दौरान क्या-क्या हुआ है, तो आपको नहीं यकीन आता कि वो आपने भेजा, उस भेजने के बाद से मज़ीद सीज़न 15 की जर्नी बनी और उसमें क्या-क्या लोग आए, कौन-कौन सी एनर्जीज़ क्रिएट हुई, क्या-क्या दुनिया हिली. इट्स जस्ट सो डिफिकल्ट टू इवन डिस्क्राइब इट. Yeah. और उसका फिर एंड रिजल्ट हम देख रहे हैं, जो हमारे अराउंड होना शुरू हो गया. हम फील कर रहे हैं. Yeah. सो वो हम फील कर रहे हैं और लिटरली भी देख रहे हैं अब तो, मतलब लिटरली भी देख रहे हैं. Yeah. Yeah. सो आई डोंट नो, आई मीन बस मुझे तो आज मतलब मैं एक्साइटेड ही हूँ काफ़ी चीज़ों को लेके. तो बस मेरा अब यही दिल ही ये कर रहा होता है कि अगर हम ये मज़ीद सिस्टमाइज़, स्ट्रेटेजाइज़ कर सकें अपनी सारी चीज़ों को, तो मैं सोचता रहता हूँ कि यार इतना कुछ पॉसिबल है. वाक़ई इतना कुछ पॉसिबल है. और इतने गैप्स हैं, इतने गैप्स ऑफ स्टोरी टेलिंग है, इतने गैप्स ऑफ थॉट्स हैं कि दुनिया सुनने के लिए तैयार, बट वो गैप्स में ज़्यादा लोगों ने इंडल्ज नहीं किया अभी तक. सो Yes. जिसने कर लिया और बात कर ली दिल से, तो वो तो लोगों तक बात पहुँच भी जाती है. वही जो बात आपकी कि फिज़िकली भी नज़र आ रहा है हमें, हम फ़ील भी कर रहे हैं. Yes. So it's just unbelievable, Jyoti, in so many ways, but it's heartening and that is hope for me. There is इसलिए hope कहता for हूँ, कह रहा हूँ you. बार-बार कि खुश हूँ. For No, but everyone, I there's feel. hope for you. There's so much hope for me because I feel like you need to give yourself also a little credit because I could have shared that article with anyone, and it would have been just another article they read and okay, this is cool. Korea did this well, but the way you took it upon yourself to be inspired from that and actually make this happen for your country, it really gives me hope. It really gives me hope, and it makes me want to tell you that it requires the right intent. It requires It the right does. intent. Yeah. Without that, Right it will intent, not right happen. intent. So thank you. मुझे no, थैंक यू क्या, आई थिंक हम एज एन आर्टिस्ट ना, ये हमारी, मुझे ऐसा लगता है हमारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में भी शामिल है और हमारी इंटेंट्स में शामिल है, हमें रखना चाहिए. सो आई जस्ट फील आई जस्ट वांट टू डू दिस एवरी डे ऑफ माय लाइफ. मुझे एक बात याद आ गई आपकी बात से. 2019 शायद में आई वेंट टू सिडनी और मैं वहाँ गया था हान जिमर का एक शो देखने. ही इज one of those people that I look up to as well, and in a way where so many things about him fascinate me. उनकी डिस्कोग्राफी अपनी जगह, बट somebody decides at an age जहाँ लोग बहुत सारे सोचते हैं कि अब आराम से बैठ के रिटायरमेंट की लाइफ भी गुजार सकते हैं. He said, no, I'm going to tour the world. Right? So at that time, you're thinking like this, and then hearing the music and hearing some of his interviews, मुझे था कि ये कौन इंसान है जो इस तरह की बातें करे, टू द पॉइंट कि जहाँ मुझे ना कभी-कभी थोड़ा डर भी लगता था, बिकॉज़ सो मच ऑफ व्हाट ही वाज़ सेइंग इज़ सो मच ऑफ व्हाट आई बिलीव इन एज़ वेल, राइट? हिज़ म्यूज़िक मेकिंग प्रोसेस, हिज़ स्टोरी टेलिंग प्रोसेस. सो मुझे था ये कौन है, मैंने इनको जाके देखना है. सो एक तो जाके मैंने उनको देखा, मैंने मतलब आई वाज़ इन टीयर्स ऑल द टाइम, बिकॉज़ मेरे लिए वो ज्योति ऐसे था कि मुझे भी यकीन नहीं आ रहा था. बट बियॉन्ड दैट ना, मैंने वहाँ गया तो इमोशनल रीज़न्स की वजह से, लेकिन मुझे ना बैक हियर एक चीज़ सुनने को मिलती थी कि ये पाकिस्तान में हो नहीं सकता. बहुत सारी चीज़ों के बारे में, ये पाकिस्तान में हो नहीं सकता, राइट? सो मैं जब वहाँ से मैं का शो भी देख रहा था, इट वाज़ एन अरीना शो, बट आई रियलाइज़्ड के हाउ वंडरफुली क्या कहते हैं, इट्स हाउ वंडरफुली इट इज़ एग्ज़ीक्यूटेड. सारे डॉट्स कनेक्टेड हैं प्लानिंग के.
कोई चीज़ ऐसी नहीं है जो आपको रैंडम लगे, कोई चीज़ ऐसी नहीं है जिस पे ध्यान नहीं दिया हुआ, म्यूज़िक से लेके, विजुअल से लेके, टीम्स आपकी एब्सोल्यूटली प्रोफेशनल। सो आई ऑलवेज़ थॉट कि यार हो तो सकता है। मेबी बस वो एक पुश की बात है, एक इंटेंट की बात है, मेबी एक गाइडेंस की बात है, मेबी एक जस्ट नियत की बात है, बहुत सारी चीज़ों की बात है। इम्पॉसिबल नहीं है, ठीक है? Yeah. लेकिन मेरे सामने जो चीज़ यहाँ इम्पॉसिबल थी, वहाँ मुझे नज़र आ रहा था पॉसिबल है। मैं वहाँ सड़कों पे घूम रहा हूँ, फिर रहा हूँ, सफाई देखी, मैंने कहा पॉसिबल है, ये भी इंसान ही है, ये पॉसिबल है। Mm. अ, Mm. कन्वर्सेशन स्ट्राइक की मैंने बहुत लोगों के साथ, जस्ट टू अपने, होता है ना कि आपको अपने दिल की वोकैब्युलरी भी इम्प्रूव इंक्रीज़ करने के लिए आपको नहीं पता होता कहाँ से कौन-सा डॉट कनेक्ट हो जाए। तो मैंने वहाँ म्यूज़िशियंस भी थे, बहुत लोग भी थे, उनसे बातचीत भी की, टेक्निकल लोग थे। आई सॉ अ म्यूज़िकल जिसकी साउंड इतनी कमाल थी, कि मैंने जाके जो साउंड इंजीनियर थे उनसे मैंने कहा कि मैंने ऐसी साउंड अपनी लाइफ़ में कभी नहीं सुनी किसी जगह पे बैठे हुए। सो मेरे सामने ना एक प्रूफ पॉइंट मिल रहा था कि जो चीज़ें हम कहते हैं कि इम्पॉसिबल हैं और ठीक नहीं हो सकती, मेरे सामने तो पॉसिबल थी। एंड हाउ दे वर पॉसिबल? बाय द पावर ऑफ पीपल। Mm. सिंपल, पावर ऑफ पीपल। सो मुझे बस समझ आ गई, तो बात बात तो टीम बिल्डिंग और ट्रेनिंग की है। Mm. कुछ कल्चर्स आपको ट्रेन कर देते हैं टाइम के साथ-साथ। Yeah. चलो अगर आपको कुछ कल्चर्स ट्रेन नहीं भी करते इन अ सर्टेन डायरेक्शन, बट अगर आपको लगता है कि वो ट्रेनिंग दी जा सकती है स्ट्रेटेजाइज़ करके, तो आप करें तो सही। फिर आप देखें लोग आपको रिज़ल्ट दिखाएँगे। Mm. मैं उस जब मैं वहाँ जाके वापस आया ना, तो मैंने अपने आप को कहा कि अब मुझे कोई ये नहीं कह सकता ये पॉसिबल नहीं है। मेरे पास तो प्रूफ पॉइंट्स हैं। Yeah. एक मुल्क में मैंने बहुत हाई उस पे स्टैंडर्ड पे चीज़ें होते हुए देख ली। और उसके बाद से ना, अब मैं बताता हूँ मैं आपकी बात से कैसे कनेक्ट कर रहा हूँ। जब आपने मुझे वो डॉक्यूमेंट भेजा, मैंने कहा लो जी, मेरा दिल हमेशा ये कहता था कि म्यूज़िक और कल्चर कैन हेल्प द कंट्री। And here is a case study of how music and art was able to get a country out of financial turmoil as well. They helped the country grow. और मेरे सामने Yeah. प्रूफ पॉइंट्स है, लो जी हो सकता है, मैंने अपने आप को बता दिया। एंड आफ्टर दैट आई डिड नॉट लुक बैक। आई सेड कि अगर Mm. हो सकता है तो फिर इसका मतलब है मेरे करने पे डिपेंड करता है, मेरे रुकने पे नहीं। मैं रुक जाऊंगा तो नहीं होगा, और मैं अगर करूंगा तो फिर शायद मेरे अराउंड भी लोग करेंगे, फिर वो कम्युनिटी डेवलप हो जाएगी, फिर ट्राइब बन जाएगी। सो आई हैव ऑलवेज हैड दिस इन माय हार्ट कि हमने ना बहुत ज़्यादा चीज़ों को बनाया होता है कि ये हो नहीं सकती, और बहुत ज़्यादा ना इसकी वजह लेज़ीनेस भी है। मैं वैसे ही जो मुझे लगता है कि है, और वो लेज़ीनेस आपको ना थॉट के नेक्स्ट लेवल पे लेके जाने देती है, ना आपको वो अच्छे वाला अनकंफर्टेबल करती है, ना फिर आप Mm. रिसर्च करते हो, ना आप एनालिटिकल होते हो। आपकी क्रिएटिविटी और आपकी स्टोरी टेलिंग भी मंडेन हो जाती है। बस आप एक रट में बॉक्स में फँस जाते हो। And I am so Mm. thankful that I have people like you around me who will always somehow, come in my life as signs and sort of show me the way. Mm. खैर, I feel it's also people. It's not just them being lazy, but it's also about very short term vision. Number one, and a very zoomed in vision. They हम्म, don't zoom out and look at the bigger picture of what हम्म, can हाँ I ये भी है। leave behind as an artist. It's not just my personal legacy that only impacted me and my bank account and my fame and all of that. It's हम्म, about, was I हम्म, able to do something for the greater good? Um, and हम्म, that's also the place that is not seen very commonly, that thing in a person. So ये भी है। again, I'm just हम्म, saying, take the हाँ credit, ट्रू, take बाय the द वे credit. शायद I'm ये भी giving you बात all है। the credit for this, you know. नहीं यार, मुझे मुझे तो लगता है यार बड़ा कुछ करने के लिए है, बस करना है, Yeah. इतना ही सिंपल and है। you're doing it. um we must proceed to the next song of season 15 on this यस, note. प्लीज प्लीज, This is a यस song यस, that has कौन सा है? just, it's binded everyone. This is Oyara. यस, I like, वाकई इट हैज बाइंडेड एवरीवन। from the narrative in the credits, it says Abdul and you and Jafar. And before I get to the narrative of the song, I was this week, while getting ready for this conversation, I was thinking back about
about what we discussed, that roots and wings, the purpose of art. And I was also watching my reaction to this song. And in that, I was also saying ki somehow the songs of this season are feeling like they are so well timed with my life right now. And every song that's coming out is kind of giving me what I most needed to hear in this time. And that's obviously the magical ways of the universe, because kahan se humne roots and wings की conversation शुरू करी और कहाँ से ये सब universal sentiments आ रहे हैं. But also the song quite literally felt like magic, not just for me, but for so many people. And the comments I read under the song and also under my reaction sort of reinforced that belief, because people were just like, I most needed to hear this. And कहाँ से आया ये warm hug, banke ye gana. So I was reading all those, and I remember I was also in a very different mental space when I was reacting to that song. So I was in a very quiet space, because not just because of the energy of the song and how it was making me feel, but also the energy of all the people's resonance with the song. It was just so powerful reading those comments and taking all of that in. So I just want to say on behalf of everyone, thank you for, giving us a song where we all found a little bit of our home, number one. And number two, I want to say that the end thought that Jafar ended with, so many people were like, wo part bahut chota tha. And then we also saw in the BTS how you all were saying ki, nahi, wo correct point pe humne khatam kiya wo thought. And, the thought that you will understand the truth, or aap sambhal jaoge. You will understand your truth. Your truth, yes. And those simple lines just conveyed so much. Like, it kind of also gave not just a shoulder where you can, put your head down and feel at home and feel relaxed, but it also gave you this sort of uh, thought that the true gallantry to face life will come from within you. It's not going to come from anywhere else. So, yeah, thank you for that reminder through this song on behalf of everyone who has connected with it. And with that, I would really like you to tell us how it all began. I will just thank the process and the story, because Yaara na is a sentiment that I feel is very valuable to everyone in so many ways. An anxiety, we generally sometimes look outwards, somehow to get help, and we look outwards for solutions, for sukoon. मुझे ऐसा लगता है कि, और वो यारा भी बता रहा है कि आपके अंदर बड़ा कुछ है, सीक्रेट्स ऑफ द यूनिवर्स हैं, बहुत सारी फीलिंग्स हैं, वो शायद कभी-कभी आप अपनी ही जर्नीज़ को ना थोड़ा अंडर एस्टिमेट करते हो, तो आपको लगता है कि नहीं है। लेकिन आपको अपनी जर्नी को ना थोड़ा बियॉन्ड टाइम भी सोचना ज़रूरी होता है। हमारी सोल्स पता नहीं कहाँ-कहाँ ट्रैवल कर लेती हैं, हमें बस नहीं पता होता। हमारी फिज़िकल सेल्फ शायद इधर ही है। बट आपके दिल-दिमाग में, आपकी रूह में बड़ा कुछ छुपा हुआ है, और आपको अपनी बहुत सारी चीज़ों की बहुत सारे एंगल्स और आइडियाज़ नज़र आ जाते हैं, अगर आप इनवर्ड्स ये कन्वर्सेशन तो करें अपने आप से। इन अ वे, ट्राई बीइंग योर ओन फ्रेंड। आई मीन, हम कभी भी ना अपने आप से उस तरह दोस्ती नहीं करते जिस तरह हमारे जो दोस्त होते हैं उनसे करते हैं। वो मुश्किल में होते हैं तो हम उनकी हेल्प करते हैं, वो एंग्ज़ियस होते हैं तो हम उनकी हेल्प करते हैं, और हमारे दोस्त हमारी करते हैं। बट वन वे और द अदर, इट्स डिफिकल्ट फॉर अस टू बी आवर ओन फ्रेंड, बट व्हेन यू आर, देन यू एक्चुअली सी के संभलने के लिए इनवर्ड्स देखना, सोचना, जानना ज़रूरी है, झाँकना ज़रूरी है। So that song actually took us through that journey. और वो जिस तरीके से भी ज्योति इवॉल्व किया, ना वो एक्सपेक्टेड था, ना इस बात का अंदाज़ा था कि ये इधर जाएगा। I started with the intent, which was a very simple intent, which was कि यार
Abdul Hannan is a songwriter, artist, and he's just reminding us of something in all his songs. The way his melodies are, the way his music are, his lyrics are, they are simple in a nostalgic way. Yeah. And so they also kind of reminded me of my early music days as well. And the heartening thing was that he is being himself. He is not, conforming to what's happening. To mujhe bhi ye karna chahiye. He's just being himself. And while he's doing that, he is creating so much love, and that love is visible with his audience, embracing him the way they were. So Abdul Hannan is मतलब बहुत hopeful मुझे एक existence लगती है for the scene, for the music, fraternity. तो आई जस्ट वांटेड टू वर्क विद हिम, और मेरे जहन में कुछ नहीं था कि बात जाएगी कहाँ, मुझे नहीं पता, कोलैबोरेशन क्या होगी, मुझे नहीं पता, और मैं इसी नीयत से स्टार्ट किया था कि नहीं पता. एंड देन वी स्टार्टेड मेकिंग थिंग्स, कुछ आइडियाज़ बनाए, बहुत आइडियाज़ बना के शेल्फ भी किए. कभी वो कोई आइडिया भेज रहा है, कभी मैं कोई आइडिया भेज रहा हूँ, टॉपिक्स पे बात हो रही है, सब कुछ बहुत कुछ हो रहा था. महीने गुजर गए. और उसके बाद एक दिन बस उसने मुझे भेज दिया, कहता मुझे नहीं पता मैं आपको क्यों भेज रहा हूँ, एक वॉइस नोट भेज दिया. और उसमें वो ये गा रहा था, क्या बताऊं. और जब उसने मुझे ये भेजा ना, और मैंने ये वर्ड सुने, ये मेलोडी सुनी. अब पहले ना हम जिस डायरेक्शन में जा रहे थे वो कोई और थी. ये डायरेक्शन ना थोड़ी सी हन्नान के लिए भी मुझे डिफरेंट लगी, वेयर ही इज गोइंग. इट वाज नॉट द वे ऑफ द बिखरा और इरादे, right? I felt it is a little different because what he's talking about right now is going really deep into that feeling. And वो depth मुझे बहुत जोर से hit की. Even I know उसकी audiences younger lot में बहुत ज़्यादा है, लेकिन मुझे भी उस तरह हिट की जिस तरह एक अच्छा गाना आपको हिट करता है और आपकी ज़िंदगी का हिस्सा बन जाता है. So his sentiment now became a part of my life. And I was personally connecting to it. But while having these conversations with him, I realized कि ये बात इस बात पे खत्म नहीं हो सकती, क्योंकि अगर इस तरह खत्म होगी ना तो दिल टूट जाएगा. this can't end like this. That's true. Yeah. Yes, कि वो बहुत हार्ट ब्रेकिंग है, क्योंकि वो बहुत इंटेंस बात कर रहे हैं, बट सिंपली. सो कोई ना कोई तो बात होनी है, कोई ना कोई तो बात होनी है जो कि इस बात को आगे लेके जाए. एंड यही इसी कमरे में बैठे हुए थे. So it's good that we are having the Yaara conversation over here. Nice. इसी कम लाइट में. ज्योति. बाकी नहीं क्या अंधेर रात बना के रखी है. क्या ब्राइट से तो पिछले एपिसोड से यहाँ ले आए हो, लेकिन देखो यही फील थी, राइट? Hannan was sitting there, I was sitting here, and I said कि कौन इस कॉन्वर्सेशन को आपसे बात कर सकता है हन्नान इसमें. And I remember कि वो उसने सिर्फ स्माइल की है, और I just asked him क्या सोच रहे हो. कहता है एक मेरे जहन में नाम आ. मैंने कहा कौन है? तो उसने कहा जाफर, काविश. मैं शायद आई थिंक 3-4 सेकंड के लिए खामोश हुआ. मैंने गो थ्रू किया कि जब वो आएंगे तो इस गाने के साथ क्या होगा, और मुझे गूज़बम्प्स हुए. और मैंने कहा यस, मतलब मैंने इंटरनली कहा यस, और उसको मैंने कहा यार दैट्स वन हेल ऑफ एन आइडिया. उफ, मैं तो इंटरनली स्क्रीम कर रही होती आप. हाँ, बिल्कुल लिटरली. सो मैंने कहा यार ये क्या बात है, और इस बात को आगे करने के लिए, या इस बात का रिस्पॉन्स के लिए भी, और मतलब हम बहुत सारी चीजें सोच रहे थे कि देखो एक तो ये हो सकता है ना कि इसी इंटेंसिटी को दूसरा बंदा कहे कि यार मैं भी इससे गुजर रहा हूँ. लेकिन हमने सोचा कि नहीं यार, कोई दोस्त अगर हो तो वो हमें आके थोड़ा सा ना काम डाउन करे. ये रोल प्ले करना है दोस्त का. अब ये कॉन्वर्सेशन में लेके चला गया टू जाफर, टू काविश. वो एंड इट वाज वेरी स्ट्रेंज के वो कराची में होते हैं, और बट व्हेन आई कॉल्ड हिम ही वाज समहाउ इन लाहौर. सो आई फेल्ट कि अच्छा कि अगर वो इतने मेरे पास आ गए, इतने पास के जहाँ मेरे घर के भी ज़्यादा दूर नहीं, वो जहाँ इस टाइम पे बेस्ड थे लाहौर में. तो मैंने उनसे कहा कि मैं आपसे ना आई वांट टू शेयर एन आइडिया विद यू. देन आई शेयर्ड. हन्नान ने जो मुझे भेजा हुआ था गिटार बजा के जो गा के
आई शेयर्ड दैट, आई शेयर्ड द आइडिया जो मैंने अभी बताया उनके साथ कि हम ये सोच रहे हैं. He loved the song. He took 2 days. Then he sat on his piano. Then he sang that part. And then he sent it to me in, you know, yes, he sent it to me. And I just did not have any words. I just sent it to Hannan. Hannan went into an emotional state. Then Hannan and I talked on the call, and it was a lot of, you know, sukoon, because that part was healing him, was healing me. And also there was a happiness of, wow, where has the song gone to? क्या बात है. और वो हमें तो नहीं पता था कुछ अर्सा पहले कि इधर जाएगा, बट वो एक साइन से दूसरा साइन से तीसरा साइन, फिर वो जब जाफर आई भी और हमने पार्ट इकट्ठे भी सुना, दैट वाज व्हेन आई मेट हिम एंड again in this room, and I still did not have words. I still did not have words, but I also kind of realized in my conversation with him ke um I don't know how to put it. It was so unbelievable that he was also in that phase of life where he wanted to express like this, you know, to himself, and also from a point of wisdom after having a life, having a full life, a musically rich life, experience rich life, collaboratively rich life. He has been such an integral part of Coke Studio इससे पहले भी. Yeah. सो वो सब कुछ जब उन्होंने बयान किया ना, तो इस स्टेज ऑफ लाइफ पे उनका ये बयान करना, आई फेल्ट के ही आल्सो काइंड ऑफ नीडेड टू एक्सप्रेस दैट. दैट इज व्हाई इट हैपेंड सो नेचुरली के इट डिड नॉट टेक अ लॉट ऑफ टाइम. आप एक जगह लगे हुए हो 6-7 महीने से और कोई कहीं बात नहीं पहुंच रही, एंड ये क्या हुआ है, हफ्ता, और यू हैव ओ यारा. एंड जो टाइम भी याद है कि जब ही रोट दैट ना, एंड व्हेन आई heard that. So in my mind and heart, because it hit me really hard, so I said, "Okay, this is what the song is called, Oh Yara." क्योंकि बात ही सारी मुझे लगा कि उस बात के अराउंड है. जब उन्होंने गा के पार्ट सुनाया तो उन्हीं के लिरिक लाइन से मैंने कहा दैट्स व्हाट इट शुड बी कॉल्ड, एंड आई asked Hannan what does he feel about it, and it's like, it's beautiful, that's what it should be. So इसमें मैं क्या बताऊँ, just happened like this यार. इसका तो मैं रीजन भी मतलब, but it's I also think it's not. just, I think it's more than being serendipitous. It's just the reading of the signs is so good, and it just hits everyone at और the right ज्योति पता है, moment. यस, और हम ना असल में कभी-कभी ऐसे प्रोसेसेस बना लेते हैं कि जिसमें कंट्रोल का नोशन हमें बड़ा इंपॉर्टेंट लगना शुरू हो जाता है. Yes. कि जिसमें हमें लगता है कि एक कोई फिजिकल कंट्रोल चाहिए चीज़ों के बारे में, और वो जो फिजिकल कंट्रोल चाहिए ना चीज़ों के बारे में, वो आपको मिसलीड भी कर देता है. और इतनी सारी चीज़ों से मुझे आपको लगता है कि इट यू नो अनएबल टू हियर, अनएबल टू फील, अनएबल टू सेंस. सो व्हेन यू बिकम दैट ना, तो कोई ब्यूटीफुल चीज़ आपके सामने भी होगी ना, अगर मैं फिक्सेटेड भी हो जाता कि अच्छा नहीं, अब्दुल हन्नान का इस तरह का गाना करना है, किसी किस्म का, तो मैं शायद एंटरटेन ना करता इस थॉट को कि यार इसने कोई और चीज़ बनाई है. और उसने भी बाय द वे कोक स्टूडियो को समझ के नहीं बनाई थी. ही वाज जस्ट शेयरिंग समथिंग दैट ही वाज फीलिंग विद मी. जब कोक स्टूडियो को समझ के बना रहे थे इससे पहले, तो नहीं बन रहा था. अब जब अपना आप समझ के बना लिया, अपना सच फील करके, तो बन गया. Yeah. और क्या क्या सिर्फ बन गया नहीं, उसने किसी और की लाइफ से भी कनेक्ट कर लिया. किसी और की लाइफ से कनेक्ट करके उसने उसको भी इंस्पायर कर दिया टू राइट समथिंग. और वो जब हो गया, फिर उसने कितने लोगों को इंस्पायर किया, फिर उसने कितने लोगों की जिंदगियां बदली. असली थॉट, रियल थॉट. व्हेन वी गो इनटू द रट ऑफ क्रिएटिंग समथिंग कि ओके ये आजकल हो रहा है, ये आजकल म्यूजिक है, ये आजकल पैलेट है, ये आजकल ऐसे हो रहा है, ये आजकल बीट्स हैं, ये फलाना है, लो जी क्या बनेगा इसमें, क्या 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 बना लेंगे हम इसमें. हम बना लेंगे कुछ गाने जिसको हम थोड़ा कुछ अरसे चला लेंगे, और फिर उसके बाद एक नया गाना लाना पड़ेगा. इसका फायदा नहीं है. मुझे ऐसा लगता है इसका फायदा नहीं है. Yes. मैं तो खुश होता हूँ जब
गाने, you know, when good songs become big, it's a happy moment. But the thing is, ये समझना ज़रूरी है कि गानों के व्यूज़, पहले भी हमने बात की थी, वही गानों के व्यूज़ भी टाइमलेस आपको रिज़ल्ट्स देंगे। वही गाने देंगे जो आपने अपने दिल के किसी पार्ट और स्टोरी से इन्फर करके या समझ के आपने लिखे होंगे। Yeah. वो नहीं आपने किया होगा तो वो फिर वही है कि वन सॉन्ग एंड फिर रिप्लेस होगा दूसरे सॉन्ग से। ओ यारा इज़ प्योर वर्क ऑफ आर्ट। Yeah. इट्स अ प्योर वर्क ऑफ आर्ट। Work of एंड दैट art. इज़ व्हाई वर्क ऑफ आर्ट। एंड Love एंड it. इसलिए उसमें ये भी देखो ना, अब उसके अंदर वो जो बात भी है कि खैर आई थिंक आपने इंटरव्यू में आगे ये बात को मेंशन भी करना होगा कि जाफ़र का पार्ट पेश है, कि मैं कर लूँ बात अभी? वो करेंगे। सवाल पूछना है, नहीं, आप ठीक कर। है। सो हाँ, नहीं, मैं कह रहा हूँ फिर स्ट्रक्चर वाइज़ भी ना, जब आप वर्क ऑफ आर्ट बना रहे होते हो ना, तो फिर आप एक और चीज़ से कन्फॉर्म नहीं करते हो। वो होता है कि गाने का स्ट्रक्चर आजकल ये चल रहा है, फिर आप सोचते नहीं हो। Yeah. आप ये नहीं सोचते हो कि ये है तो ऐसे करना, फिर आप सोचते हो कि ओके, स्टोरी कैसे कहाँ जा रही है? स्टोरी कैसे किसी पॉइंट पे लीव कर रही है लिसनर को, कहानी कहाँ छोड़ रही है Yeah. कि जहाँ से कोई बात बन रही है, राइट? सो वो आप उस तरह सोचते हो, फिर आपका ये नहीं होता कि अच्छा ये टेम्पलेट है तो मैंने ऐसे करना है। सो टेम्पलेटलेस, ओ यार टेम्पलेटलेस है। आई मीन अभी भी मेरा दिल करता है कि वो जो पियानो वाला वर्जन है और जो अक्यूस्टिक गिटार वाला वर्जन है ना, वो एक वर्जन हमारे पास है जो हमारा वर्क इन प्रोग्रेस डेमो वर्जन था। रिलीज कर देना चाहिए। I have it written down here. Can you please release an acoustic of this song? More than that, I think we should release the story version of the song where Yes. how it all started. कि ये वो रॉ फीलिंग थी जिसमें एक अक्यूस्टिक गिटार पे हन्नान ने किया, और वो दूसरी रॉ फीलिंग थी जो जाफर ने बैठ के पियानो पे किया। दोनों अपनी अपनी पर्सनैलिटी से कनेक्टेड, और वो दोनों पार्ट्स मतलब फ्लो इन कर जाते हैं एक के अंदर दूसरे में, और वो रफली रिकॉर्डेड हैं, लेकिन उसमें कोई ऐसी बात है जो कि मैजिक है। Yeah. खैर, No, but I love समथिंग दैट what you said about the structure of the song, because and it's so not formulaic. It's so not formulaic. यस, You're letting यस, go of control. You're letting the song be born in the way it wants to be born, and letting it say the thing it wants to say in the way it wants to say it, बिल्कुल, through the बिल्कुल, different बिल्कुल, channels that are meant to be a part of it. It's बिल्कुल। beautiful. I think this sort of approach to music making, um, from the Is heart, needed, is needed, and is it's so needed. missing, which is why I get so much Yes. hope, and I think everyone gets so much hope when we hear music like this. It doesn't need to follow a set pattern or structure, uh, or formula. And I also feel the audience na is also growing और बड़ा clearly. सीजन को रिलीज हुए पे बहुत अरसा हो गया, लेकिन नाउ व्हेन फैंस कम इन या लिसनर्स कम इन, व्हेन दे समहाउ मुझे रिकॉग्नाइज भी करके आ जाते हैं, सो द काइंड ऑफ सेंटिमेंट दे हैव अबाउट द सीजन एंड इट्स इमोशन, आई हैव felt it is growing with the conversation they are having with me. Now in their conversation, the country is included. Our intents as people of love is included. When you start hearing it back from other people, from audiences and fans and listeners, तो बात मुझे मतलब जिस तरह आपको भी होप में ना एक इजाफा हो जाता है Yeah. कि ओके, everybody is growing together, and that is where what community building is. So art at the end of the day, community building को अगर help करता है ना, तो बड़ी सारी चीजें पॉसिबल हो जाती हैं, और आई थिंक सॉन्ग्स लाइक ओ यारा प्ले अ वेरी पिवटल पार्ट इन इट। The community building as well, I feel, takes me back to our last conversation where it was about taking control of a narrative, because for too long has the control been probably quote unquote the wrong hands, so kind of the wrong messaging that keeps going out, or the wrong sort of belief that gets propagated. And I feel like especially as someone from across the border, I'm saying this, that it and I see this same thing in a lot of comments as well, that through Coke Studio we are also able to feel that we are all very similar, like our commonalities are more, not just in the emotions we feel, but even in the roots we have and the cultures that we call our own, right? बिल्कुल, बिल्कुल। And I feel that the fact that you're feeling
the audience is growing and maturing and they're joining with you and talking to you about certain things, I feel that those voices are gravitating towards you because they feel that way, that you are helping our people's voice, and people who think like us or feel like us, you're helping us become louder and more seen in the world. So, True. and I think the impact of that growth and that increase of those voices will, I'm hoping, snowball into better, let's say, better relations, for the lack of a better word. You're right. You're right. And Coke Studio is doing that. There's so much fandom of Coke Studio Pakistan on this side. Just say, Yes. it. So very, very important. Oyara is definitely one of those songs. There's this very interesting thing that I also. You're right. The sentiment is, so ubiquitous. It's everywhere. Mm, Ke, Coke Studio is a bridge between the two countries, yeah, and in the kind of bridge where at least this bridge does not have any toxicity. So there are no judgments when it yeah. comes to Coke Studio, because it is talking about embracing diversity. It is talking about unity. It's talking about oneness. It's talking about rootedness, right? So it again, Jyoti, this gives me hope कि जब आप इस नुक्ता नजर से गुफ्तगू करते हो लोगों से, तो ना दीवारें जो है ना वो गिर जाती हैं. Yeah. दीवार कंध भी टह गई मगर उला में भी तो है ना. Yeah. सो वो बात तो सही है कि जब आप अपने आप से और अपनी कहानियों से टॉक्सिसिटी डिटैच करके एक आर्ट पे या म्यूजिक पे या लव पे गुफ्तगू शुरू करते हो, तो दीवारें तो गिर जाती हैं. Mm. सो मुझे लगता है कि ये कोशिश नहीं रुकनी चाहिए, वरना बैलेंस नहीं है. इट्स डेंजरस. सो आई एम जस्ट हैप्पी कि वी गेट सो मच लव फ्रॉम इंडिया एंड इट्स सो ब्यूटीफुल. मैं I got a message from somebody who is an Indian, but they are living abroad in the UK, Mm. and unke grandparents are from Pakistan. Mm. So they said ke there's always been a side of me, you know, that has wanted to understand my Pakistani roots better. And through the music that you are creating, I am able to channel that and process that and understand my Pakistani roots better. Mm. So thank you for giving me that opportunity to channel and understand. Yeah. So, पता नहीं ये- मेरे लिए ये सबसे बड़ी बात कि कोई एक इंसान को अपनी फीलिंग्स को प्रोसेस, चैनल और अंडरस्टैंड करने में हेल्प हो गई किसी आर्ट और म्यूजिक की चीज से. Yeah. मेरे लिए सबसे बड़ी बात है, बिगर देन एनी एक्कोलेड, एनी अवार्ड, किसी इंसान को कनेक्ट करने में हेल्प हो गई. सो और यही तरीका है, मतलब मैं तो ऐसे ही बहुत आपको आई थिंक लाइक excited bacha all the time, and a lot of times, and that excited bacha also feels that if there is something like world peace, I know मैं बहुत अजीब सा साउंड करने लगा हूँ, if something like world peace can be attained, it is going to be through music. Yeah. This is what I really believe. Yeah. No, but what this person said to you, so many of my friends have told me, and I feel like, especially the people of Punjab and the surrounding areas that were divided, it's just the people on ground suffered too much. And the people बहुत ज़्यादा. whose voices were the ones in power back then just decided collectively for everyone that they couldn't coexist in peace together, which the actual people on the ground never really had that sentiment or felt that way. So I feel like that suffering has carried forward in different ways through the generations, and then some kind of It has. solace is found in music like this. Yes. Some kind of closure, for lack of a better word. Um, but will closure ever come completely? We don't know. पता नहीं. We We don't don't know. know. But what is important is to amplify
the voices of those who didn't believe that coexistence was not possible, but who were made to be a part of that thought and forced into the realities of it on ground. And uh, anyway, I feel सही like कह रहे I am with you. It may sound very cliched, things like world peace and all of that, but I feel things can divide us, then there are things that can bring us together as well. बिल्कुल, क्या बात की है। और यही प्रूफ है कि अगर there are things that can divide us, then 100% there are things that can get us together as well. Yeah. And we see it. ऐसा भी नहीं कि हमें दिखने को नहीं मिलता, मिलता तो है सारा वक्त। Yeah. कितनी सारी चीजों पे together हैं। Yeah. So there is hope, Jyoti. That's the best thing. There is hope. You're giving me also so much hope. I had to given up. But anyway, No, coming back. You have, मैं आपको क्या बताऊं, you have so many stories, you have so much, मतलब आपके थ्रू, आपसे कॉन्वर्सेशंस के थ्रू तो मुझे भी होप मिलता है। वरना you have told me so many stories of your part of the world that I never knew existed because I've never seen them being propagated. But those stories again are stories of love and stories of purity. Yeah. And those stories are inspiring me to go on to another phase and journey of my life. They are carving that next story for me as well, personally. So it's maybe just we do not connect with enough people who will understand the world of hope we are coming from. But then when we do meet those people, we realize that it was okay, it was that simple. So it's just about, again, it's just about our tribe. कौन है वो लोग, कहाँ है वो लोग, मिल जाएं वो लोग, प्लीज मिल जाएं, हम दुआ करते हैं। सो वो मिल जाते हैं तो वो आसान हो जाता है, आसान हो जाता है। मतलब यू डोंट हैव टू वेक अप एंड देन इवन उस तरह का हसल भी नहीं करना पड़ता आपको। आपको सिर्फ हसल तो अपनी वो तो लाइफ में है ही है, लेकिन आपको फिर साइंस सुनाई दिखाई देते हैं। आपको वो लोग होते हैं आपके सामने, आपसे उनकी कॉन्वर्सेशन होती है और आपको कहानी खुद नजर आती है कि it's being written right in front of you, बस सामने आपके। So इसलिए जरूरी है आपके right people around you who can inspire you with stories, with their conversations, who can do right interventions. So मैं तो lucky हूँ that you are there with me and we are friends and we are having these beautiful conversations that are opening my mind further of क्या क्या हो सकता है। It doesn't feel like a struggle, honestly, when it's not a struggle. Yes. Yeah. यार मैं यही तो कहता हूँ कि हम स्ट्रगल करके, मुझे समझ ये नहीं आती, इतने लोग जब स्ट्रगल करके मेहनत करके ऐसी चीज पे करते हैं जो आपको पता है कि इट्स in that typical realm and they work a lot to make that possible. So much time goes into it. I just want people, if they can just start feeling and believing, so much you are able to hear and understand them from your surroundings even. जिन लोगों को आपको ऐसा लगता है कि यार इनसे बात करके मैं क्या बात करूं, आप मौका ही नहीं देते ना उस कॉन्वर्सेशन का। आपके आसपास लोग होते हैं बड़े, आप उनसे रैंडम कॉन्वर्सेशन तो इनिशिएट करो, वो भी आपको कोई ऐसी बात बता देंगे कि आपकी कहानी कहीं से कहीं चली जाएगी। लेकिन हम बात ही नहीं करते। मुझे ऐसा लगता है हम अपने अपने अंदर ही रहते हैं और फिर उसके बाद जब अपने अंदर ही रहेंगे तो कितनी को नरिशमेंट कर लेंगे आप, अपनी सेल्फ नरिशमेंट कितनी कर लेंगे आप। इसलिए तो हम जो बात करते हैं, जर्नी करें, ट्रैवल करें, लोगों से मिलें, कल्चर से मिलें, उनकी कहानियां सुने, हर एज के इंसान की कहानियां सुने, हर एज के इंसान से बात करें, हर किस्म की नॉलेज अपने अंदर इकट्ठी करें, ये आपकी नरिशमेंट हो रही है ना, फिर ऐसी कहानियां भी उस लिहाज से फिर बनेंगी। सो खैर ये people don't talk ये तो enough हमारी डिस्कशन also है। to They strangers, don't talk enough. which Yes, reminded yes, me, you yes. just mentioned you were in Sydney, and I remembered while you were talking, but now it's coming back. I was sitting on the bench. I was looking from the other side, from the Harbour Bridge side. I was looking at the Opera House and just sitting and like eating something. I was just sitting on a bench alone, and the guy just sat next to me and we just started talking. We had the most beautiful conversation. Never saw him again, and he क्या introduced बात me. है। He introduced me to the didgeridoo. You know, the long The instrument instrument, that yeah. they क्या बात play. है। That moment stayed with me for so long, till today. So anyway, just strike up conversations.
exchange स्ट्राइक अप thoughts. कॉन्वर्सेशंस। और मैं All good. बहुत पहले ना अपनी लर्निंग्स में एक बात लिखी हुई थी, मुझे एग्जैक्ट वर्ड्स तो नहीं याद, लेकिन वो थी कि वैल्यू एवरी स्मॉल कॉन्वर्सेशन, Yeah. they often end up paving the path for big change. Hmm. Right? So, and if I just track back to a lot of worldly successes as well, of the music or the work that I have done, जो कि मतलब लिटरली आप बता सकते हो कि अच्छा देखो ये हुआ ये हुआ ये हुआ, किसी को भी बताने के लिए कि देखें रिजल्ट तो आता है. All of those things also began with a small conversation. What is the conversation that we were having about even K-pop? It's a small conversation that we were valuing. Yeah. Right? So मुझे याद है, हम तो याद है ढाबे पे बैठ के कोक स्टूडियो सीजन 14 के टाइम पे मैं, शेरी, आई थिंक बिलावल का भाई उमर, सो वी आर दिस वन क्लैन जो अभी हम सुल्तान, सो दिस इज दिस वन क्लैन जो कि हम अक्सर जब हम पहाड़ों में भी गए थे ना बटाकोटी, सो यही वाला ग्रुप गया था. सो हम अक्सर बैठ के ना वहाँ जब गए कि कह ले चाय पराठा खाते थे, तो हम इस तरह की बड़ी बड़ी बातें करते थे कि यार अगर ऐसे हो जाए, और हम मतलब लैंग्वेजेस की बात करते थे कि इतनी लैंग्वेजेस हैं पाकिस्तान में, इतनी लैंग्वेजेस में इतनी खूबसूरत खूबसूरत मेलोडीज हैं, हमें अक्सर नज़र भी आ जाती हैं, कभी किसी यूट्यूब की वीडियो की फॉर्म में, कभी किसी किसी कोई भेज देता है, टैलेंट स्काउटिंग में नज़र आ जाता है. ये क्या वजह है कि हम इसको सेलिब्रेट करने से, दुनिया को दिखाने से थोड़ा सा बैक फुट पे हैं? कि कोई मसला है, कोई क्या है, कोई लो सेल्फ एस्टीम है, क्या है? मैंने कहा यार दिखा, अपनी बात करते कि दिखाते हैं ना यार, देखते हैं क्या होता है. और वो कनायारी का बेसिस थी वो बात, वो वाकई कनायारी की बेसिस थी कि इस तरह उस टाइम पे था कि लैंग्वेजेस को इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाए कि द वर्ल्ड इज ऑल्सो एबल टू अंडरस्टैंड द ब्यूटी ऑफ द लैंग्वेज, द ब्यूटी ऑफ द पीपल हु आर सिंगिंग इन दैट लैंग्वेज, देयर स्टोरीज. एंड उस वक्त कनायारी नहीं एग्जिस्ट करता था, बट वो इंटेंट एग्जिस्ट करना शुरू हो गई थी. और ये मतलब चाय की प्याली पे कॉन्वर्सेशंस हो रही हैं जो आलू के पराठों पे. Love it. बट आई एम सेइंग, बट वो कॉन्वर्सेशन क्या, अभी बल्कि हम एक जगह पे गए तो आई वेंट विद अनदर वेरी डियर फ्रेंड बिलाल शाह. सो वी वर हैविंग दिस, इज माय फेवरेट प्लेस इधर मेरे घर के पास ही है, इट्स अ चाइनीज थाई प्लेस, में बहुत पसंद है, यारा 5. तो वहाँ मैं ना हमेशा अपना, जब समझ लें मेरा कंफर्ट फूड है, मैं वहाँ बैठ के बिलाल के साथ ही क्या बैठ के वहाँ मैं वहाँ बैठ के खा रहा था खाना. ही रिमाइंडेड मी कि 5 साल पहले जुल्फी भाई आपने ये बातें की थी, आपने बात की थी, उस वक्त तो कोई कोक स्टूडियो कुछ नहीं था, आपने बात की थी कि हमारे पास कितनी कहानियाँ बताने के लिए दुनिया को, पाकिस्तान को कॉन्फिडेंस से बतानी चाहिए. आपने बात की थी कि लेबल होगा इधर, तो लेबल क्या क्या कर सकता है, इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट हो सकता है. labels are there. Yeah. राइट राइट. हाँ बिल्कुल. फिर आपने बात की थी कि मतलब ऑब्वियसली उस तक मुझे नहीं पता था मैं कोक स्टूडियो करूंगा कि नहीं करूंगा, लेकिन आई डिड टॉक अबाउट द अपॉर्चुनिटी व्हिच इज एज ग्रैंड एज कोक स्टूडियो, एंड व्हिच वी हैव दैट कॉन्वर्सेशन विद द वर्ल्ड वेयर देयर इज सो मच टू टेल. एंड आई एंड दैट कॉन्वर्सेशन आई टोल्ड हिम, और ये 5 years बैक की बात है, कि इफ वी आर एबल टू डू इट वी कैन एक्चुअली क्रिएट अ ह्यूज ग्लोबल ऑडियंस फॉर आवरसेल्व्स. तो क्यों नहीं हो सकता, दुनिया तो सुनना चाहेगी हमें, हम बड़े, देयर इज समथिंग वेरी स्पेशल अबाउट अस, चार्मिंग अबाउट अस. तो उसने मुझे याद कराया कि आप सोचें कि आपने 5 साल पहले मुझसे बातें की थी, और वो सारी ये कॉन्वर्सेशन थी, आप एक दूसरे से दोस्तों से कर रहे होते हो, लेकिन आपका होप अंदर से जो है ना, आप अपने आप को भी ट्रेन कर रहे होते हो विद ऑल दीज आइडियाज. एंड 5 साल बाद उसमें से इतना कुछ हो रहा है, मुझे थोड़ी देर के लिए यकीन ही नहीं आया. तो मैंने सिर्फ शुक्र अदा किया कि यार वाकई फ्रॉम दैट डे टू दिस डे, this much time has passed, so much has come true, so much of intent, ख्वाहिशें, so much of the niyat is now, has become actions and moments for people to emote with. So much has changed, so many stories, so much has contributed to इतने लोगों की कहानियां, so much has created these wonderful collaborations and resulted in songs, stories, even the world's attention towards our cultures. So all these small conversations actually, have personally taken me to a point जहां मतलब कि मैं
मैं पता नहीं, You can just मैं marvel. शुक्र अदा ही कर सकता हूँ। हाँ? You can marvel and at the magic. हाँ, आई ओनली मार्वल कि वही तो मैं कह रहा हूँ कि मुझे यकीन नहीं आता व्हाट इज़ दिस लाइफ? Oh, what is this life? That's a very deep thought. आई मीन बिल्कुल मुझे तो मैजिक ही लगता है सब कुछ। Yes. क्योंकि मे बी आई हैवंट स्टॉप्ड बिलीविंग इन इट। Yeah. आई हैवंट स्टॉप्ड बिलीविंग इन मैजिक। Yeah. Which, your thoughts are leading me to something I recently heard, and I'll give credit to Mark Manson for it. That's the like we have a higher purpose in life is a myth. And because this is what he says, that a purpose is basically a concept that is describing the feeling of knowing what we want to do with our life, right? And that's not something you find, that's something you create for yourself. Wow. So he's like, what happens is the feeling of feeling that you're doing something important and relevant in the world is what makes you feel like you have meaning and purpose in your life. And so I'm not trying to find my life purpose, I am creating it, is how I'm describing you listening to your conversations right now, because you created that purpose for yourself and you're living it. So it's beautiful. And it's unexplainable. पता नहीं मुझे That's the unexplainable magic. लगता है। That's the magic. That's the magic. Yeah. है ना? And in a way, I think even this song is saying that you will find it within yourself. There's a whole ocean of things in you, and this whole feeling of dejection you're feeling about your life right now and the way things are, that'll all go away, because eventually you'll understand that you have to create something that makes you feel like you're doing something important and of value. So True. wow, how we are connecting back to the song. उफ, ये एक गाने की लाइन है जो कहते हैं ना, हनान है ये उलझे धागों सा मेरी सोचों का जहां। मुझे ना वो लाइन एक्चुअली वाज द लास्ट लाइन दैट वाज रिटन फॉर द सॉन्ग। When he was writing the second verse, he wanted it to take the idea to another place. And I remember when Hannan wrote it and sent it over, I felt it completed his narrative. कुछ missing था इस लाइन से पहले। और ये लाइन बहुत सच है, बहुत बड़ा। Hard relate. उलझे धागों, हाँ, हार्ड रिलेट। वो जो आप बात कर रहे हो ना कि we find and we create our paths and ways, उससे पहले उलझना भी बड़ा ज़रूरी होता है। Yes. And I think that is why the song gives hope, because हम ज़्यादातर लोग हम उलझे हुए हैं। और जब आप लेकिन इस आइडिया से अपने सोल को कनेक्ट करते हो ना कि देयर इज़ एन अपॉर्च्युनिटी एंड होप कि मैं संभल जाऊँगा वन वे और द अदर। तो यू रियलाइज़ कि अच्छा, मैं उलझा हुआ हूँ, ये मेरी स्टेट ऑफ माइंड है, ये मेरी एग्जिस्टेंस है, दीज़ आर द हैपनिंग्स अराउंड मी, दे आर गिविंग मी एंग्जायटी, बट ऐसा नहीं है कि दिस इज़ गोइंग टू बी फॉरएवर। This and also I also then thank my your life. You to thank your life and the universe for making you pass through this, because what is going to happen after that, you don't know the kind of hope it can create, not just for you but for so many others around you as well. Yeah. How much it can soothe your heart. So वो उलझना भी ज़रूरी है। मतलब ये एक मुझे अक्सर चीज़ लोगों में नज़र आती है कि जब उलझते हैं ना, तो वो उनको लगता है कि नथिंग गुड कैन कम आउट ऑफ दिस। बट नहीं ना,
उलझना फर्स्ट स्टेप है संभलने के लिए। तो उलझें, और उलझना उस वक़्त ही होगा ज़्यादा जब आप क्यूरियस होंगे, जब आप अपनी लाइफ़ को मंडेन चीज़ों में नहीं बल्कि क्यूरियोसिटी से, ट्रैवल से, जर्नी से, कन्वर्सेशन से आप अपनी एम्बेलिश करेंगे लाइफ़ को, तब एंग्ज़ायटीज़ भी क्रिएट होगी। कनेक्शन से एंग्ज़ायटीज़ भी क्रिएट होती है। लेकिन फिर उसका नेक्स्ट स्टेप ये होगा कि आप कहीं न कहीं पहुँचेंगे। फिर आपको मिल जाएगा जाफ़र, और जाफ़र आपको बता देगा कि भई लुक इनवर्ड्स। काविश आपको बता देगा कि लुक इनवर्ड्स, या वो आप खुद ही अपने लिए काविश बन जाएँगे। आपकी इतनी वोकैब्युलरी बढ़ जाएगी कि आपको समझ आएगी क्या करना है। या आपके इसी इंटेंट से कि मैंने कन्वर्सेशंस करनी है, कोई ना कोई मिल जाएगा यार आपको। कोई मोमेंट मिल जाएगा, कोई इंसान मिल जाएगा, जो कहीं न कहीं से सँभाल देगा। लेकिन अपनी इवन एंग्ज़ियस जर्नीज़ को भी थैंक यू कहें। मैं आपको यही कहूँगा Yeah. कि ऑल्सो वैल्यू देम, या It's also about the realization that life is not coming at you, but through you. And that takes time to understand. क्या बात है! उफ़! थ्रू यू। लेकिन इतनी मुश्किल बात है टू अंडरस्टैंड दिस। Yeah. और And कितना बड़ा सरेंडर है इसमें। मतलब इसमें तो ईगो को बिल्कुल आपने निचोड़ के फेंक देना है। क्योंकि जब थ्रू यू है तो फिर तो it's not really related to you in that way. It's just through you, because and you don't know what is inside you, your capabilities, your abilities, so many questions and beautiful answers and so many journeys are, and you are unaware of them. So ना आपका ईगो से अटैच्ड है ना कुछ। So just to believe in के यार ये मेरे थ्रू होना है, उसमें क्या डिटैचमेंट का लेवल चाहिए। उफ, ब्यूटीफुल। and also everyone is so in the state that Abdul was कि मेरे साथ ये हो रहा है और मेरी लाइफ में ये चल रहा है और ये हो गया आज और मेरे 5 साल पहले ये हुआ था इसकी वजह से I couldn't progress in life ये वो but the whole point of it is life is coming through you, which means the you always have the power to take some action, and True. with whatever cards you're dealt, right? Life is coming Yes. at you. No, it's coming through you. You gotta. Yes. It takes so much of the uljhawing to happen before you understand that you still have the power to make it flow. Yes. So I love this song on another level. I love this song. But yeah, so I feel like when I was reacting to this, I also remember because what I've reacted and said in that moment when I've just been hit by the song, sometimes I don't remember. So then I rewatch my reaction before our conversations. And उस दिन मुझे इस गाने ने वो याद दिला दिया था, The Myth of Sisyphus, which is a book. And the Greek Okay. god Sisyphus who's been doomed to carry the same boulder, push the same boulder up the hill his whole life. So he keeps living this loop, which kind of is metaphorical. And this author who's written this book is like, I have to always think of Sisyphus at the bottom of the hill when he's about to restart his climb, dragging that boulder up the slope again. I have to look at him in that moment and imagine that he's happy because he is finding meaning in his doing of the task, in the living of the life, not in some weird destination. Or so you have to, I feel like the song was also telling you that you have to feel that the process and the journey is the purpose. बिल्कुल। So yeah, I feel like, sorry. It's always the purpose. I think process is the purpose. Yeah. So you find joy in whatever moment. I mean, okay, well, I'm going to digress and start sounding preachy, so I will not. But just hearing that Abdul shared these thoughts with you, and it made me feel that he is someone who is an overthinker, and I think he said this also in the BTS, didn't he? And I was like, yes, सब artists overthinkers ही होते हैं लगता है, right? Without being an overthinker, you probably can't be a very transformative artist. What are your thoughts on this? हाँ, पता नहीं, ओवरथिंकर वो हमने टर्म को थोड़ा-सा नेगेटिव कॉनोटेशन में ले गए हैं, बट
Yeah. वही जो हम बात कर रहे थे कि उलझना तो ज़रूरी होता है, अगर आप संभलने टाइप फीलिंग को कभी फ़ील भी करना चाहते हैं। दे आर लाइक यू नीड बोथ फीलिंग्स। Mm. और ओवरथिंक नहीं करेंगे तो एज़ अ स्टोरी टेलर you won't be able to find layers of your art yourself even when you're writing it. Mm. So मुझे तो लगता है कि ओवर थिंकिंग शायद वो टर्म इस तरह की हो गई है कि उस कुछ नेगेटिव इंटेंशंस इन्वॉल्व लगता है हो गई हैं, बट ओवर थिंकिंग क्या है? इट्स जस्ट लाइक यूर थिंकिंग डीपर देन यू नो than the usual way of thinking or how somebody will be thinking, how most people will be thinking. It's Mm. good to think deep because then you're able to, I feel, express better as well at the end of the day. Mm. और दूसरी बात ना, और एक तो तरीका मुझे लगता है कि ये ज़रूरी नहीं होता कि आप कुछ चीज़ लिख रहे हो, तो वो लिखा आपने बहुत ओवरथिंक करके होगा, नहीं। वो आपकी लाइफ़ की कशमकश आपको उस पॉइंट पे ले जाती है कि बस वो Flow. कन्वे उस पॉइंट पे ऐसे हो जाता है। Yeah. वो फ्लो, वो शायद 5 मिनट में हो जाए आपके, Yeah. क्योंकि आपने चीज़ों को फ़ील किया हुआ है आपने चीज़ों को, राइट? सो अब्दुल हन्नान इज़ एब्सोल्यूटली एन आर्टिस्ट। Yeah. ही इज़ ट्रूली एन आर्टिस्ट who is thinking, who is feeling, who is writing songs, who wants to express to people, you know, और वही वो कन्फर्म नहीं करता रेगुलर जो आपको Mm. नज़र आते हैं तरीक़ाकार, and that is why he has been able to carve his own audience, Yeah. his own army of fans, legion of fans. Yeah. So it's clear कि अगर चलें ओवरथिंकिंग ही कहना है तो इसका मतलब ओवरथिंकिंग हेल्प्स। It's इससे तो beautiful. यही दिखाई देता है। I'm It's also, beautiful, I yeah, embrace and it. yeah, I truly embrace हाँ, overthinking. आप मुझे खुद बताओ ना, if whenever the amount of hope that you feel when you end up realizing कि okay, like minded people हैं, like Mm. minded thoughts हैं, we can tell stories together. तो वो जो hope की feeling है after a long period of lacking that hope, Yeah. तो वो जो अब hope की feeling आती है, वो दिल में क्या क्या मतलब सेलिब्रेशंस होती होंगी, Yes. क्योंकि वो फील किया ना, पहले वो इतना कुछ फील कर लिया है, Yeah. एंग्जाइटीज फील कर रही है, लैक ऑफ होप फील कर लिया है। और अब जब इसलिए इसलिए ज़रूरी है ये जो ज़्यादा सोचना, कोई बुरी बात नहीं होती। Yeah. आप अगर आप स्पेशली यू नो इवन इन योर करियर्स इन व्हाट यू आर डूइंग, Yeah. आपकी ट्रेन ऑफ थॉट अगर आपको लेके जाती है डिफरेंट प्रोबेबिलिटीज और पॉसिबिलिटीज पे, तो लेके जाए। मेरे जिस तरह मेरी तो चॉइस थी, मैं तो बचपन से मतलब आई डोंट नो व्हाई बट आई लव्ड मैथमेटिक्स। I loved all Same. these, and these probabilities and permutations. तो ये हैं दिमाग में। अब इसका हर चीज़ इसकी मतलब ये नहीं कह रहा कि सिर्फ प्रोज़ हैं, इसके कॉन्स भी हैं, क्योंकि आप दूसरे की ज़िंदगी बर्बाद कर सकते हो अगर आप इतने इतने ज़्यादा मैथमेटिकल हो। ये तो मुझे पता है कि कन्वर्सेशन के अंदर या जब काम इकट्ठे कर रहे होते हो तो यू वांट टू अटेन अ सर्टेन लेवल ऑफ व्हाट इज़ हैपनिंग, Mm. एंड यू नो यू वांट टू मेक श्योर कि कोई प्रोबेबिलिटी मिस ना हो रही हो, कोई कोई कुछ गैप ना यू नो सामने हो। आई मीन ऑब्वियसली गैप भी तभी नज़र आता है जब आप किसी चीज़ के बारे में ओवरथिंक चलें करके फिगर आउट करते हो कि यार ये भी तो हो सकता है, ये भी तो हो सकता है, ये मसला भी हो सकता है। सो आई थिंक द वर्ल्ड नीड्स ओवरथिंकर्स। Mm. I ये इसका agree. एंड I think his overthinking journey, as I saw in the BTS, he used to imagine कि मैं खड़ा होके स्टेज पे आतिफ असलम के जैसे गा रहा हूँ ये वो. But look ये at him देखिए ना, today. He's carved his own niche and his own sound and his own, you know, एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली fan टूरिंग द base. वर्ल्ड। Yes, बिल्कुल yes. And बिल्कुल। he also said कि गाना was transformative for him also. Like it removed a lot of self-doubts within himself. So again, a new artist is born after the process. ओ यस, आर्टिस्ट तो मतलब वो है ही ऐसा कि उसका प्रोसेस ही ऐसा है कि वो इम्प्रूव करना चाहता है, ग्रो करना चाहता है इमोशनली। हन्नान Yes. इज दैट गाय, Lovely. इमोशनली ग्रो करना चाहता है, एंड ही नोज ही इज इन दिस जर्नी Mm. इन विच ही वांट्स टू फील थिंग्स। Oh, कुछ lovely. आर्टिस्ट होते हैं जो कि एक पॉइंट पे That's जाके उनको beautiful. लगता है कि हाँ, कुछ आर्टिस्ट वाकई मैंने देखा है, दे डू स्टॉप because they somehow start feeling कि okay, this is the the boundary of possibilities, इसके अराउंड हम चीज़ें कर सकते हैं इमोशनली, म्यूजिकली, और वो फिर सालों साल आपको नजर आता है कि बात वही है। Mm. With artists like Hannan, they are flexible, they are emotionally flexible, Yeah. they are thinkers, they want to know more about the world, they want to travel, they want to talk,
They want to feel. That's the most important thing. Most important thing. Yes, yes, Oof. yes. They want to feel. Well So said. So ऐसे लोग बड़े ज़रूरी हैं और मैं लास्ट सीज़न भी हमारे माइंड्स में हनान वाज देयर यू नो बट जस्ट अ हिंट ऑफ दैट थॉट बट इस सीज़न में जब क्यूरेट करना शुरू किया ना तो देन आई रियलाइज्ड के in a way the season is incomplete without him. He's such an amazing story from this part of the world. Yeah. And such a wonderful story of hope. इसको तो बताना ज़रूरी है अगर हम किसी प्लेटफॉर्म के थ्रू कोई बात करनी है तो वो अब्दुल हनान की बात तो होनी पड़ेगी उसके बगैर नहीं बात कंप्लीट होती हमारे मुल्क के हमारी जर्नी की हमारे आर्टिस्ट्री की सो फॉर मी ही इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन इन द इंडस्ट्री ही रिप्रेजेंट्स मोर देन व्हाट वी सी ऑन द सर्फेस उसकी जर्नी बहुत केस स्टडी है अगर इफ यू स्टार्ट थिंकिंग अबाउट इट सो खैर या दैट्स हनान I'm actually marveling at your selflessness also as a I don't know, as a creator, as a person in the space. You're so, it's important to recognize and not just recognize, but then also be like, how can I contribute to this amazing person's journey, or how can I be a part in some way? That is also yes. that kind of initiative is not common, easy to come by. So beautiful. His message for you is that I can't wait to perform this song live, Xulfi. We also cannot wait. We also cannot wait, Hannan. Is it happening? आने वाला है वो time. Really? It is happening. It is happening. So we can't wait. And I have seen it being performed live once. You have at Kaavish show. Yeah, in Lahore. Yes, yes, yes. Or that clips of that evening gave me so much FOMO. I was like, यार वो heavily emotional moment था. इतना मतलब वो पूरा शो और फिर हन्नान का आना और वो यारा परफॉर्म करना और and you were in the audience just were they looking और at फिर you? जब वो there was a moment when Hannan looked at me for a moment during O Yaara and I was in tears. He was in tears and we both realized that if we're going to break down really intensely if we keep that if we keep looking at each other. So we realize हो गया और हम एकदम से दोनों ने ना just start looking elsewhere but that moment was something when we saw each other or the way Hannan was experiencing even Jafar's part वो भी बड़ा special moment था. I mean आप वो बंदा ना हन्नान बहुत खूबसूरत है. वो relish करता है इस बात को कि आज मैं इधर काविश के शो पे हूँ. कहाँ से मेरी कहानी स्टार्ट हुई थी. मैं यहाँ काविश के शो पे जिनको मैं लुक अप टू करता हूँ उनके साथ मैंने एक परफॉर्म भी किया है. उनके साथ मैंने गाना भी किया है. मैंने उनके साथ परफॉर्म भी किया है. आज मैं उनके साथ बैठ के उनको सुन सक रहा हूँ. एक ही स्टेज पे हूँ. शुक्र है यार. This is also rootedness, humility, surrender, and that was और ये कोई आपको ना आप बोल के नहीं बताते हो ये बातें. ये आपकी शक्ल पे होती हैं क्योंकि आप अगर आप ऑथेंटिक हो तो आपकी फीलिंग्स आपकी शक्ल पे होती हैं. मुश्किल नहीं होता. सो मैंने उस वक्त देखा कि उसकी सारी फीलिंग्स उसकी शक्ल पे थी. सो ट्रांसपेरेंट. कोई बंदा नहीं होगा जो उसकी इस फीलिंग को ना समझ पाए. सो ही इज वेरी लकी. He is that transparent, and that is the reason why his music works. Yeah, his truth is out there. His truth is out there. Oh, I love that. Sometimes I can't cover my emotions or my expressions, and I feel like I keep telling myself, don't. And now I'm like, no, my truth is out there. It's all good. I like it. Yes, it's all good. It's perfect. I will आसान जिंदगी आसान करने वाली frame बात this. है ना. Yes. हाँ, ये जिंदगी आसान करने वाली बात है. अपने आप को मुश्किल में डालते हैं कि किसी की खातिर हम एक्सप्रेस ना करें क्योंकि वो जज ना कर ले या वो कुछ सोच ना ले या पता नहीं लोग क्या कहेंगे. सो हम अपने आप को एक मुश्किल में डाल रहे हैं. हमें भी फ्रीडम और रिलीज चाहिए इस चीज से. Yes. As people who are sensitive, as people who are overthinkers, we need more release. So bas it's okay. As people who are The real. truth is out there. Yeah. Yeah, there's people who are real, बिल्कुल. So ये तो अच्छी बात है. Speaking of real people, Maz and Jafar and Oof, यार.
I can't. They're just so pure. Their music is so pure because they are like this. Um, and we could again see that in this song and its BTS and all the reels and everything. And I would really like to ask you, you've already told me about Jafar, how you sent him the concept. He recorded फिर वो आए और आपको पता था गाना कहाँ जा रहा है. I want to ask you about Maz and his entry into the thick of things. Maz is one half of Kaavish, pehle to. Yes. But Maz is one of the most genuine people I've met in my life. Yes. I've not even met him and I agree. And एक बात यार, आप कुछ लोगों से पहली दफा मिलते हो ना और आपको बस फीलिंग आ जाती है कि दोस्त है. वो वाइब है उनकी, इंतहाई पॉजिटिव, इंतहाई काइंड, केयरिंग वाइब आपको नजर आता है. उनकी आंखों में दिखता और है. फिर आंखों में दिखता है और उनका इमोशन. Yes. आपने देखा जब भी ओ यारा उन्होंने परफॉर्म किया है, जो काविश ने टोटली परफॉर्म किया. Have you seen him sing it and what he's feeling? Yes. Oof. No, so that's him. I know it's not a secret, but I still want to say it. Maz is also one hell of a guitarist. The way he plays the acoustic guitar, Jyoti, I am a fan. इतना प्यारा मैं आपको बता नहीं सकता. I mean, to the point where I also just want to collaborate with Maz on something as well. Yeah. Okay, Maz, let's do this song, and I just want you to be the guitarist in it, the guitar arranger in it. इतना जबरदस्त है. आप निंदिया रे का स्टार्ट थोड़ा सुने, आप गिटार. उफ, वो गाना स्टार्ट, वर्ड्स स्टार्ट होने से पहले गाने के ही आपको ले जाता है उस जगह पे, और एक गिटार पार्ट है यार. इट्स एक्चुअली माय फेवरेट गिटार पार्ट एवर. उस निंदिया माय फेवरेट गिटार पार्ट एवर. आप एक दफा दोबारा सुनना. ऐसा वो पार्ट है, राइट. सो माज अभी भी जब उन्होंने अपनी कंट्रीब्यूशन भी की यारा में आके, उन्होंने पार्ट्स भी बनाए, तो बात कहीं से कहीं चली गई. ही इज लाइक, मतलब. No, wait. Now that you've said this, I have to read out his message for you, because this is the humility in this man. I wanted to share that throughout the experience of O Yaara, the way Xulfi bhai welcomed and encouraged me, it allowed the best version of my guitar playing to come out. I just want to thank him for that. And I hope we meet on the tennis table again soon. I knew that was coming. I just knew. अगर वो ये ना कहते तो मैं कह देता. But यार, I am so over the moon. Best version of my guitar playing मतलब to come मैंने out. क्या माज आपको अलाउ कर रहा है, man. You are amazing. You are incredible. And I was just honestly an admirer there, just looking at you do these wonderful things, make these wonderful arrangements. Even recording you was honestly one hell of an experience. And I can't wait to record you again. I'll be honest, I can't wait to record you again and meet you again. And yes, on the table tennis table. I can't wait to And the just studio. hang out with you. Yeah. For our sake. So I am looking forward. Yes, 100%. But I have to say that I have never met them. I've never met Maz. But I was actually watching the BTS of the song before our conversation, Abhi. And I kid you not, मैंने pause किया video where Maz is talking to the camera. I just paused and I was just looking at him for 10 seconds, because I was like, this man is so pure. His aura is so pure. His eyes are so pure. You can just see 100%. So much goodness. I don't even know how to express it in the right words, but I just had to pause because I was like, I could, some people's aura just comes even through a camera and a screen, you know? His does. It's that, ठीक कह रहे हो. it's that clean and like pure and it's beautiful. मुझे तो वाकई इंतजार नहीं हो रहा कि अब हम soon we are going to be together at the Coke Studio live show. And
Yeah. Oh my God. And the song is going to be performed, and I actually can't wait. And not just the performance ke gana, but just all of us getting back together Yeah. and just having conversations और Yes. बातें करें और बातें करें. ऐसा हो गया मुलाकात भी नहीं हुई. So I'm just looking forward to all of those feelings again. Just having these conversations, and obviously the concert वो तो है ही है. Mm. But can't wait. Can't wait. Sometimes it makes me think that time really flies in life. Life passes us by, Yes. and I feel like when I hear you saying something like this, I feel like एक physical जगह होनी चाहिए जहाँ आप सब लोग रहें. Like we are all in the same college, so that you यार all हाँ यार. meet. If you all if you interact with the people of the same sort of vibe and space, then पता नहीं क्या हो सकता है, possibilities of everyone's journey and music. हाँ And यार. um और वो हो जाएगा. मुझे ऐसा लगता है कि इफ जो भी हम जर्नीज पे हैं ना अभी, वो कहीं ना कहीं इस चीज में भी कल्मिनेट करेंगे कि ऐसी स्पेसेस भी हों जहाँ ये mm, चीजें फ्रीक्वेंट हों, mm, और ग्रैंड बिग थिंग्स आर फ्रीक्वेंट इन दो स्पेसेस. सो mm. ये भी हो जाएगा. वी इंटेंड फॉर इट. So both of them now, first of all, beautiful humans, Jafar and Maz, wo dikhta hai. Or I just want to ask you, how was the energy in the room different, if at all, when they walked into the song and then all of you were jamming? Please give us a behind the scenes into the jam room, because the little clips that we got in the BTS were not enough. हाँ, they were not enough. I completely agree. ये बात तो सही है. ये काविश की ना एक एक लेगेसी है, और वो उनका डिस्कोग्राफी, फिर दूसरा उनका एक कोक स्टूडियो से कनेक्शन भी. So now when Kaavish will enter a space of this world of Coke Studio in front of all those people who have grown up listening to their songs, who have grown up watching them perform, it's quite a moment, Jyoti. In a way where कि आप फैन भी होते हो, एडमायरर भी होते हो ना, तो आप एक और जोन में चले जाते हो. एंड विद काविश, उनका म्यूजिक भी ऐसा है कि आप इमोशनल हुए बगैर रह ही नहीं सकते हो. मतलब रह ही नहीं सकते इमोशनल हुए बगैर. सो वो जब लोग जिनकी डिस्कोग्राफी शायद पाकिस्तान की मोस्ट इमोशनल डिस्कोग्राफी है किसी भी बैंड की, आर्टिस्ट की, वो जब आपके साथ आके परफॉर्म करने लगे हैं, तो आप सोचें कि जो लोग जैम कर रहे हैं उनके दिल में क्या 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 फीलिंग्स होंगी. वो डिस्क्राइबेबल तो नहीं होंगी, ये तो मैं आपको लिख के दे सकता हूँ, लेकिन मेरे लिए भी नहीं थी डिस्क्राइबेबल. मेरे लिए भी नहीं थी. बट वो एक Kavish does bring sukoon with them, and there is no doubt about it. Even if it's in pain, they bring the sukoon with them, and I think that's the calmness they brought. And because of the calmness they brought, I also understood that with now, the song also, a lot of the song was made in the jam. We were recording the jam because we wanted to use those sounds जो कि इतनी ही रॉ रियल हैं कि एक जैम पे दे आर हैपनिंग, राइट. I'll tell you why. वो जो, अब I don't know how to explain this, but when Hannan sent the first partner, the way he played the guitar and was singing, I connected to that idea of not playing the guitar with a lot of refinement. It was like it's a little broken as well. It's a little not sounding the conventional perfect. So the song was progressing in a way where it needed all that absolute real rawness in it somehow. कि आपने इसको परफेक्ट नहीं करना. आपने अगर आप उलझे हुए जिंदगी आपकी, आपका जहान उलझे हुए धागों जैसा है, तो वो म्यूजिकली भी उलझा हुआ नजर आना जरूरी है. While saying that, it also has to represent the calmness that Kaavish brings, right? Because they were bringing that.
काविश पेव्ड द वे कि इसमें कुछ ओवर कॉम्प्लिकेट आप कर नहीं सकते. So if you're trying to play the drums and trying to play it in a certain way where you are doing a lot, it will not help the sentiment that is being expressed. If you are, playing a guitar solo, which is, usually आपको बहुत सारे गानों में सुनाई देता है कि कभी कभी जेनेरिक गिटार सोलोज होते हैं कि गाना हो रहा है तो बस एक गिटार सोलो है तो वो है. बट इन हियर, if it has to be a guitar solo, it has to support the calmness, right? Because that guitar solo in O Yaara is just before Kaavish enters. Kaavish. So it was on a lap steel. And these are notes which flow into each other slowly like an ocean, right? And it's like this, it's moving like this, right? Yeah. So you've been thinking like this, the people who are a part of it, they guide the process. They tell you if you are listening and you are sensing, तो आपको समझ आती है कि अच्छा इन लोगों की personalities, ideas, discographies, कैरेक्टर्स, इनकी फीलिंग और वाइब आपको क्या कह रही है कि गाने को कहाँ लेके जा रहा है. सो मेरा तो और ये मुझे पता था इतना कि यार इस पे जैम पे बड़ा कुछ होना है इस गाने में, क्योंकि हम जैम को रिकॉर्ड भी करें सो दैट वी विल टेक दिस रिकॉर्डिंग्स later on and we are going to make them more broken. Like it's happening in another kind of, not time तो नहीं कहूँगा, just they're happening inside you, in that way. We all listen differently to different things. Yeah. So if somebody is feeling broken, so it cannot be very, the regular definition of smooth. So all those, even if you hear the drums, the drums are very detailed, intricate, and that's why somebody like Gambi comes in to make sure, that wisdom is there to balance. Yeah. To balance the whole song, and balance क्यों? क्योंकि this is what the song is asking. Yeah. This is what Kaavish and Hannan are asking. So all of that, I think, as you said, when Kaavish entered, I think they made me understand O Yaara better. Where I cannot take this, and trust me, जब हम बना रहे थे उस time पे we did not know कि Abdullah Siddiqui will be one of the music producers on this. Okay. So when the jam process was happening, during that, when I felt all these ideas coming together, then I told him and asked him, "Yaar, listen to this song, and I think we should work on it together. Aa jao ab." And so that you can also do your magic. And then I also told him my concept idea of the song, and we had all these recordings from the jam. And and then he's, Abdullah Siddiqui, he is बड़े बहुत सारे तरीकों से ना इंटरनली इमोशंस को चैनल करने का ना मेरा उसका बहुत कॉमन ग्राउंड है एक. और जो म्यूजिकली जब हमने कुछ चीज़ को, उसी इमोशंस को जो म्यूजिकली कहीं ना कहीं पहुंचाना होता है, तो हम वो थॉट में ना बहुत अलाइन कर जाते हैं. सो with all of this information coming in, and then Abdullah Siddiqui coming in and sitting together, we had the jam with us, we had the jam recordings with us, we had the narrative with us, all those beautiful voices with us. And then वो जो final उसकी form बनी ना, जिस form के अंदर you can hear the pain, you can hear the brokenness, you can hear जो एक beautiful imperfection. So that is, we started adding it more. So even the beat is not completely, absolutely phrased in every, phrased in absolutely in tempo. It's a little swung, so that it shows, क्योंकि आप जब काम भी होते हो तो वो you won't be very कि बिल्कुल एक एक चीज मैंने ठीक हिट करनी है. आप कामनेस के अंदर भी थोड़ा सा हो सकता है कि आप किसी रिलैक्स्ड फील में यू आर अ लिटिल लेड बैक. और इवन जब आप एंग्शियस होते हो और आप बहुत सारे थॉट्स भी आपके दिमाग में होती हैं, तब भी आप परफेक्ट नहीं हो सकते, तब भी आप डिले पे हो सकते हो, राइट? सो ऑल ऑफ दीज वेरी वेरी इंट्रिकेट डिटेल्ड थिंग्स, दीज वर पार्ट ऑफ आवर कॉन्वर्सेशंस अब्दुल्ला और मेरी, कि हम उसको उस तरफ लेके जाएं जहां वी आर नॉट ट्राइंग टू क्रिएट समथिंग usual or typical, but something which has a world of its own, because already with Hannan and Jafar it's a world of its own. और हमने इसको इधर लेके जाना है. अगर हम कहीं और लेके चले जाएंगे तो सॉन्ग विल सफर. सो खैर, मुझे वो सारी बातें याद आ रही हैं आहिस्ता आहिस्ता, तो मैं सोच रहा हूँ कि वाकई हाउ Kaavish, his presence
really influenced me, inspired me to understand कि इस गाने में क्या नहीं हो सकता. Clearly. बिल्कुल. That's half the battle won. More than. Yes. बिल्कुल more than half the battle. जो आपको पता ये नहीं करना है इसमें. Yeah. यही तो सारी जंग ही हो रही होती है. सही कह रहे हो आप. Yeah. So Kaavish's presence in the studio, you're saying, helped you navigate the soundscape of the song and figure out what the song needs and doesn't need together. There is something I read on YouTube. I would like to read it here. Dear Jafar, I don't know whether you will see this or not, but I want to tell you that till now I had two homes. But this portion of singing has become my third home. I want to rest here forever. This small portion has compelled me to open my heart and cry out as loud as possible. ये था effects. Yeah, the world needs such emotions, you know. It needs such expressions coming from artists, such writings. All the more reason, यार. Yes. मैं कहीं और चला गया हूँ. क्यों है ऐसे गाने इतने कम? क्यों? People find their home in these songs. It's so. And a lot of people. Lots of people. Yeah. This is Umi Pandey. Shout out. क्या बात है यार. Thank you for such a wonderfully written comment, Umi. Wow. क्या फीलिंग डिस्क्राइब कर दी. और ये हम सबकी फीलिंग है वैसे. इट इज समथिंग दैट वी फील एज वेल. यार जाफर तो खैर जाफर इज मैजिक, यू नो. Yeah. And when he expresses anything, कुछ भी, कोई लाइन भी, कोई बात भी, मतलब और वो क्रिकेट की बात भी कर रहे हो ना. But I've said this to him, but it sort of feels he's by the way very avid cricket player, very passionate. Okay. Right. One is cricket, one is table tennis. One is table tennis. So हमारे connections बड़े जबरदस्त बनते हैं आपस में. But even when he is talking about anything, it is just that you want to believe him. That is his power, his voice, his expression. अब ये कैसे नरिश हुआ है, नर्चर हुआ है उनकी लाइफ में, इवॉल्व हुआ है, मुझे नहीं पता. लेकिन मेरी उनसे कोई पहले इससे पहले शायद हमारी एक बहुत पहले मुलाकात हुई थी. लेकिन आप समझे यही हमारी पहली मुलाकात थी जो ओ यारा पे हुई. और you know, just having conversations with him was instant connection, instant emotional connection. बस. और पता है जो आप ट्राइब वाली बात करते हो ना, आपको पता चल जाता है लोग it's instant, you know it. Yeah. Instant. और फिर वो खुशी एक अजीब किस्म की होती है. Yeah. So मैं तो उन लोगों में से हूँ जो कि उनको बस बैठ के सुने वो जो भी उन्होंने बात करनी है. I'm so amazed that you're saying कि पहली sort of actual meeting थी. Yes. And at a point where he also said कि I was in this space mentally and in my thoughts that I needed to write these lines. Oof, the timing. I mean, it's just magic. You know, in a way where ये तो खैर मेरा एक वो है ना कि I felt कि he also needed to write these lines. But the journey that he was in was very that he is in, it just came at the right time for the song. And that is the most beautiful element of the whole process. सोचे ना स्टार्ट भी कहाँ से हुई बात कि नहीं हमसे गाना बन रहा था और एक दिन बस इसी कश्मकश में उसने कुछ बात कर दी जो कि बात ही मतलब देखें बहुत सारी चीज़ें नहीं हो रही होती तो आप एंग्शियस ही होते हो ना. तो जब आप एंग्शियस होते हो जब गाना ना बनना भी एक एंग्जाइटी का रीज़न बन सकता है. लेकिन वो शायद एंग्जाइटी के रीज़न ने भी शायद ड्राइव किया हन्नान को कि वो कुछ एनर्जी इन वर्ड्स में डाल दे.
और वो चैनल कर ले अपनी लाइफ को, अपने एक्सपीरियंसेस को। सो वो बात, ये तो सोच के स्टार्ट ही नहीं कि कोक स्टूडियो का गाना बन रहा है, ये तो एक अब एक्सपीरियंस मेरे अपनी लाइफ का मैं बयान कर रहा हूँ। फिर जाफर का आना, जाफर का इसके काविश का आना, अपने इमोशंस को इसमें ऐड करना, और वो भी रियल इमोशंस, कोई भी नहीं, सारी कहानी के रियल हिस्से। सो मतलब क्या प्रोसेस, मुझे तो It's you're allowing the magic to flow. मतलब when Abdul starts his first words only, you're like, यस, you immediately connect because हम सब वही सोच रहे हैं life में. And then हम when इमीडिएटली, yes, and then when Jafar comes in, that part in the BTS where he said कि यहाँ पे थोड़ा मैं आलाप दूंगी, like you know he eases into it. वो क्या magical like काम किया उस portion ने listener पे, I can't even. वो आपको प्रिपेयर कर दिया यू राइट, सुनने के लिए वो बात, और तो प्रिपेयर कर दिया। और एक जो ना मुझे बात जो बहुत ज़बरदस्त लगी थी ना, वही, हाँ, खैर मैं आई एम गोइंग हियर एंड देयर बार-बार, बट हन्नान की एक बात में जो बहुत ज़बरदस्त बात थी। गाना स्टार्ट होता है ना, क्या बताऊँ? यस, तो यू नो those two words. इट्स जस्ट द वे आई, आपकी आवाज़ ब्रेक ब्रेक हो रही थी। Oh sorry, I said those two words, that's it. We all start with that. यस, क्या बताओ? मेरे लिए ना पर्सनली ऐसे था कि मैं शायद इट्स इट्स सॉर्ट ऑफ अ रिस्पॉन्स टू समथिंग of a conversation that is currently happening. So it is a beginning, but you have sort of, you're starting from midway, Midway, yes. right? Right. So I felt it like this because even the reason that why we feel that क्या बताऊं was like, हम बहुत सारे लोगों को ये बोलना चाहते हैं कि यार मैं क्या बताऊं, Yes. जो आवाजें अराउंड हैं, जो कॉन्वर्सेशंस अराउंड हैं, जो सवाल अराउंड हैं, या हम जो फील कर रहे हैं इंटरनली, जिसको हम वर्ड्स में नहीं डिस्क्राइब कर सकते। तो ऐसा लगता है कि बहुत सारे वो कह तो रहे कि मैं क्या बताऊं, आई डोंट नो मैं कब से इन सवालों में घिरा हूं, एंड इन अ वे ही इज आल्सो आंसरिंग दैट टर्मोइल, जस्ट विद दिस एक्सप्रेशन ऑफ एंजाइटी। मुझे लगता है ये एक आंसर भी है, और मुझे इसमें भी थेरेपी फील होती है कि यार बस ये मैं बोल नहीं रहा था, लेकिन अब जब वो हन्नान का पार्ट आया ना, सो दिस इज एग्जैक्टली व्हाट आई वांट टू से टू पीपल, Yeah. कि मैं क्या बताऊं। And also लोग सो आई तरस इट जाते हैं कि रिलीव्ड। कोई, sorry, नहीं नहीं नहीं, प्लीज प्लीज। I'm saying लोग तरस जाते हैं कि कोई हमसे पूछे कि आप कैसे हो और क्या चल रहा है, like people are thirsting for someone to ask them and then to for them to say क्या बताऊं ये हो रहा है और ये चल रहा या है। यस 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 So यस, वो भी आंसर होता है लोगों की नीड कि कोई पूछे हमसे। पूछे हमसे, बिल्कुल। और वो ऐसे ही लग रहा था कि किसी कॉन्वर्सेशन में वो ऑलरेडी हैं हम्म, हनान, और वो उस कॉन्वर्सेशन में उन्होंने अपनी बात की है, और फिर वही कॉन्वर्सेशन एक पॉइंट पे इंटेंसली रीच करती है, और फिर वही कॉन्वर्सेशन पहुंचती है जाफर काविश तक, फिर काविश बात करते हैं और वो फिर कॉन्वर्सेशन खत्म कहाँ होती है कि किसी तरह वो काविश की बात थ्रू दैट आइडिया ऑफ दैट मेलोडी हनान तक पहुंच जाती है। वी डोंट नो हाउ, वी डोंट नो व्हेन, but it just reaches his heart. It just gives him that calm. And that is how emotions are, by the way. हम यहाँ आर्ट बनाते हैं, म्यूजिक बनाते हैं, कहानियां बताते हैं, नहीं पता होता कि हमारी कौन सी कहानी का कौन सा एलिमेंट किसी की जिंदगी में क्या चेंज लेके आ सकता है, और शायद हमें ये भी नहीं पता होता कि वो किस किस की जिंदगी में चेंज लेके आ रहा है, Yeah. किस किस तरह से। तो उसी तरह हनान भी जाफर से मिलता नहीं है उस पूरी सिचुएशन में, Yes. बट वो ब्यूटीफुल एनर्जी, वो ब्यूटीफुल सेंटिमेंट, वो ब्यूटीफुल होप किसी ना किसी तरीके से ना, अगर सच्चा होता तो, और आप ढूंढ रहे होते हो ना कहीं से क्यूरियस होते हो, तो आप तक पहुंच ही जाता, पहुंच जाएगी। अगर Yes. आपने सरेंडर किया, बस ये बात। एंड आई ऑल्सो बिलीव कि आपको आइडियाज भी ऐसे ही मिलते हैं,
जो आपने फिजिकली एक्सपीरियंस नहीं किए होते, लेकिन they have been all around you, and they have, and because they are powerful ideas and you have also surrendered, those ideas around you are there like energies. And because if your antenna is has a strong receiver, it will try to tune into that channel, and that channel is not dependent on time. It can be any time because वो चीज exist करती है कहीं ना कहीं. So even I feel the ideas, the melodies that reach us, they also reach us, and we never know sometimes. A lot of artists say we don't know what happened. We just, Yeah. ended up making this and doing this. So I also feel the universe has all that beautiful vocabulary inside it. So we have to just tune in sometimes to figure it out. And And even when we were, sorry. and also Hanan humming the thing at the end, even though he was sitting there facing or feeling such dejection and lowness in life, it just kind of also reinstates what you just said, that if even when you're in those kind of phases and you're feeling those thoughts and feelings, even then if your heart is still open, you can still get the message that is meant for you. Absolutely. The एंड इंटरेस्टिंग बाय द वे बात कि ये एंड हमने ना विजुअल का, ये आई थिंक शूट से कुछ दिन पहले ही वी फिगर्ड आउट. एंड मैंने बड़ा डरते डरते ये आइडिया दिया था टीम को. मैंने कहा आई डोंट नो इफ दे, आई नो दे ऑब्वियसली दे विल अंडरस्टैंड, बट आई डिडंट नो हाउ इट विल बी रिसीव्ड. पता नहीं क्यों. सो आई जस्ट गिव दैट आइडिया कि व्हाट they इफ don't meet. राइट एट द एंड. Oh, No, the the humming. fact, yes, even the fact that they don't meet and they are never together. This also happened in a workshop which was not like very far away from the video shoot. इस गाने को कि वीडियो मतलब बहुत we were मैं वैसे जनरली बता रहा था इसका विजुअल प्रोसेस भी कि कुछ गाने ना आपको बड़ा टाइम लगता है बिकॉज वो इतने ब्यूटीफुली सिंपल होते हैं और वो इतने डीप होते हैं कि आप उसको विजुअल से डिस्ट्रैक्टिंग नहीं बना सकते किसी भी तरीके से. और वो विजुअल इतना सिंपल होना चाहिए कि वो बहुत सारी बातें कर दे, लेकिन वो सिंपल तरीके से ही करे. वो बहुत ज़्यादा प्रीच करके या बहुत ज़्यादा विजिबली करके ना करे, वो हिंट्स दे के कर ले चीज़ें. राइट. सो दैट वाज द होल आइडिया. सो बड़े एंड पे जाके ये आइडिया थोड़ा सा फिगर आउट हुआ. अच्छा, और उसमें भी ना वो जो जो जो, जो आइडिया द फैक्ट के वो एंड पे हम कर रहे हैं, मैं उसका बता रहा था कि मुझे था कि पता नहीं if everybody will receive the idea well in my team. And everybody actually said ke, wow, it just sort of shows where the story goes. And we did it. Hannan loved it as well. Kaavish loved it as well. मुझे वो मोमेंट याद है बस कि वो एंड पे हम कर रहे थे और मैं बच्चों की तरह एक्साइटेड था कि पता नहीं how will this idea be received. But it was received well. I was happy. Yeah. No, so I don't know if you remember, but in my reaction, now this is one of those songs that I wish I could erase from my memory and listen to it again as a first listen. Okay. Because the day I heard it the first time, there are some movies and books that you are like, oh, I wish I Yeah, could yeah, yeah, experience them again for the first time. This is one of those songs because in the day I listened to it, I was very in a different state. So that humming at the end, I told Shruti, I remember saying this, I'm not convinced that he could so easily come out of that zone, because I was in that zone in those days. I was like, I need more time to feel depressed. Just kidding. But but now when I look back, I feel like that part is the one that makes me feel the best because it's like one Kaavish's part especially, and I said this also in my reaction, the second O Yaara is such a warm hug. By the time he ends, I'm feeling the warmth, and then when that humming starts, it's like it's that Atlas shrugged moment, it's like Atlas has shrugged and he has dropped the weight off his shoulders, the weight of the world. It literally feels like that moment. Let it go. Let's hum this tune, Yes. So thank you for adding that. Beautiful. Beautifully done.
Beautifully done. एक्चुअली पता है, गाने होते तो कहानियां ही हैं. पता नहीं, शायद द वे आई सी इट, इट्स अ स्टोरी. वो होते तो 3, 4, 5, 6 जितने मिनट की भी हों, लेकिन उनके अंदर अपनी एक यूनिवर्स ऑफ टाइम होती है. और वो ऐसी यूनिवर्स ऑफ टाइम होती है जो ये नहीं डिटरमिन कर रही होती कि ये सब कुछ इसी टाइम में हुआ है. वो हो सकता है कि पता नहीं कितने सालों में हुआ है, और वी आर जस्ट सिंबॉलिकली रिप्रेजेंटिंग इट. सो द आइडिया वाज नॉट कि उसको अभी समझ आ गई है. Yeah. वी जस्ट शोड अ मोमेंट फ्रॉम सम, मे बी Some आई डोंट नो points. व्हाट Yeah, in टाइम, the सम future. Yeah. पॉइंट Yeah. इन हिज लाइफ के वो दोबारा उसको शायद उस गलियों में, उसको पसंद है वो गलियां, वो दोबारा वो किसी दिन आया है, और वो आके बैठा है बेशक 6 महीने बाद, और वहां से उसको वो एनर्जी आज फील हो गई है. सो दिस इज टाइमलेस. Yes. Emotions are timeless. Beautiful. Yeah. Beautiful. Yes, it hit me later. It'll hit anyone who's in that open heart place. I was not that day. Yes. So I know you know? exactly what you mean. Not being in that space. Not being in that space. But Yes. we need that, Yeah. that calmness. Yeah. Just to know, also just to know कि कोई उलझ के ही उस पॉइंट पे आया कि वो ये बात कर सकता है. Yes. तो आपको होप मिलता है कि ये मेरी बात भी हो सकती है. दिस कैन बी माई स्टोरी एज वेल. तो फिर आपको फील होता है कि आप अकेले नहीं हो. और क्या फीलिंग चाहिए हमें? Yeah. सबसे बेस्ट फीलिंग होती है बाय द वे, Yes. व्हेन यू रियलाइज कि यू नॉट लोन. Yes. This song did that, and how. So I like this is all a sort of testimony that it's a culmination of everyone's journey coming together to create something like this. And I want to share one more comment with you, which was beautiful. It was for because people were talking so much about Jafar ka part और लंबा होना चाहिए था, all those you saw those. So someone wrote and said ki one thing the song has proven is the immense popularity of Kaavish. People have been flooding Coke Studios YouTube with comments expressing their love for the band and wanting to see more of them. That's why people felt like enough nahi tha. Then, as someone who discovered Kaavish relatively recently, I had no idea they were this popular. I had assumed they were an underrated gem, but it's been so heartwarming to see such love and appreciation coming their way. Jafar barely sang for a minute in this song, and look how happy that has made so many people, including myself. Oh yes. Amazing. Oh yes. Oh yes. So that is also a culmination of the journey, in the sense that you need a certain level of artistic wisdom to know where a song has ended in what it's trying to say. And I think all of you collectively brought that to this. So, Collectively, yes, collectively. Yeah. ये डिसीजन जो थी ना, ये हम बहुत सारे लोग, और इवन लोगों के अलावा जो उस जैम रूम में भी लोग थे, द होल टीम, कुछ फीलिंग्स ना यार, दे आर स्टेयरिंग एट यू. कुछ रियलिटीज आर स्टेयरिंग एट यू. यू कांट जस्ट डू एनीथिंग अबाउट देम, एंड यू शुड नॉट. इफ इट्स जस्ट ट्रैवलिंग टू दिस पॉइंट एंड सेइंग कि ओके, this is where I will stop. Take a stop. You have to listen to that sign as well. Sometimes it's very difficult to stop, by the way. जब आप एक जैम में भी enjoy कर रहे होते हो ना, and not that we didn't try. I have a clip of Jafar singing Hannan's chorus melody. Yeah. So we want to hear this. You can so share. just saying, okay, we went in that direction as well, and it was beautiful. You because tried it. Okay. And it was beautiful. The way it I'm sure. sounded was beautiful. मैं नहीं बता सकता कितना खूबसूरत, because I always felt that chorus in Jafar's voice is also something else, right? But when the whole story is asking you, don't go there, don't go there. It's just saying to you बार बार, don't go there. And then now I feel also कि हाँ यार, बिल्कुल ठीक बात कर रही थी हमें हमारी इस कहानी और जर्नी के, नहीं वहां नहीं जाना चाहिए. Because the narrative that this 1 minute of Kaavish created, Yeah. it also created the conversation that the song should have had more Kaavish, but it also created conversation that we need to hear more Kaavish. And for a lot of people, who is Kaavish as well? Just the younger lot. Yes. So in a lot of ways, it helped the discovery and the to rediscovery. grow
Yeah. and the rediscovery and the narrative of Kaavish to propagate further through this younger generation as well. Yeah. Because I think this is all what we all want to feel. Ab to wo younger lot generation bhi, we talk about it as well. Yes. They also want to log off, right? Yes. They also want to have these real experiences. Slow They living. also, yes, they slow living. They also, another conversation with another another conversation with another friend that I was having. They said that we were having this conversation with this younger generation, and they said we don't like the notion and idea of celebrities. And they were asked why. They said and because they're straightforward and open. So I am not saying I am क्या कहते हैं उसे conforming to their ideology. I'm just saying they said because they feel celebrities are fake. Right? इतनी wisdom कहाँ से आ गई उनमें? I like हाँ it. अब I've always felt this. Sorry. Gen Z, you're giving me hope. Thank you. So anyhow, तो हुआ ये कि उसने कहा कि हमने उससे पूछा आपने किसको सुनना है, तो उन्होंने कहा हमने असफर को सुनना है, बयान को सुनना है, because we relate to that person. हमने काविश को सुनना है because we relate to those people. I love it. So audiences are changing, and their notion of celebrities will also change. The notion of what they want to hear and see, and it's visible. It's happening. हमारे इर्द गिर्द हो रहा है. पता नहीं क्या हमने बात स्टार्ट की थी, मुझे याद नहीं रहा. मुझे वापस जरा लेके जाएं. हम क्या बात कर रहे थे? You were talking about Kaavish singing Abdul's that one, and Jafar singing that part. Okay. बिल्कुल. So that one part, उसका कम होना भी एक narrative building दुनिया में बदल गया. So all good, all beautiful. एक तो ये, और दूसरी बात, उसके बाद कोई बात होती भी ना, तो वो लगती ना, preachy हो जाता कहीं ना कहीं से. बस वो बड़ा एक होता है, बैलेंस होता है, डेलिकेट. सो वो बस डेलिकेट बैलेंस भी रखना था, एंड वी ऑल फेल्ट. और असली कहानी क्या थी? असली कहानी थी, हन्नान ने वो बात की, जाफर came into the picture. I sent him that with the idea that we are trying to figure out. He wrote something कि यार ये मुझे लगता है कि इस बात का रिस्पॉन्स है, या इस बात की कंटिन्यूएशन है, या ये मैं कहना चाहता हूँ. तो उन्होंने तो कह दिया, दोनों ने कह दिया. अब इसके बाद की क्या बात हो सकती है जब दोनों ने कह दिया और वो इमोशनली कनेक्ट हो गए इस कॉन्वर्सेशन में? अब कोई बात क्या है? कोई नहीं. सो आपको इस प्रोसेस ने बता दिया कि ऑथेंटिसिटी ने, कि आप कोशिश मत करें बिना वजह. हम कर रहे थे ना, नहीं हो रहा था, तो फिर यू ट्रैक बैक टू वेयर यू स्टार्टेड फ्रॉम एंड वेयर इट वाज एंड व्हाट टच्ड आवर हार्ट्स. सो इट वाज दैट वर्जन of Hannan singing on an acoustic and then Jafar on the piano, and that was what was touching us, and that was what happened, and that's what everybody is listening to as well, that structure. Beautiful. So khair, you got me excited when you said we recorded this Abdul's this part also in Jafar's wife, because यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, I will show you. I said I'm wondering what if someday we get to hear a version in which the voices are flipped. How would that sound? Oh, I've written that here. Just a thought, random. But at this point, I must say, from Maz, he continues. He said, from Jafar and I both, we have nothing but gratitude and love for Xulfi bhai. He treats us like brothers. He treats us like brothers, and that is what he is for us as well. Smiley face. Yeah. मुझे इतनी खुशी हो रही है, ये सुन के मैं बता नहीं सकता, क्योंकि मुझे दोनों इतने पसंद हैं. And this is the mutual feelings amongst us. Thank you, God. Oh, beautiful. So then you said you decided to bring Gambi into the picture also because of the wisdom he adds to a song like this. Experience, emotional experience. Yes. I just find it amazing how everything fit so well. People were so happy to see him, by the way, in the... Yes. Could see that in the comments. Okay, we are back after a Chotu break. We've been talking about the artists and their experiences and their journeys, bringing the best to the song and the layers to the song. I think the same happened with the video as well, and we've discussed this many times. Ki visual or video team
they also bring their best to the table every time. And Murtaza Niaz directed this. Umar Butt was, designing the set. Hashim Ali was a consultant. Amir Mughal was your cinematographer, and their teams. Um, the layers that they added in this song, and also, पहले वाले videos, हमारे लिए वो treasure hunt sort of हो जाता है. Easter eggs हैं, इसका meaning क्या था, उसका like literally for us as viewers, it's like every time we watch it, we discover something new. It kind of almost becomes like, one of those Marvel movies where you are, or a Game of Thrones episode where we are looking for the hidden things. So I loved it. I love the concept of a buskers street and an art street where people just gather and they, collectively perform and sing along and everything. I love the idea of Abdul and Kaavish going into different directions and that moment where that overlap happened. I love the thought that he took the darker gully. I loved that there was an old lady there. I loved that someone was fixing the light and the light comes on. Her face lit up. I love that she handed a rose to him. There was so much little symbolic meanings in every aspect of this video. Please tell me about it and how this team put this together. So beautiful. I think the song drives the visual idea as well. Always गाना ही drive कर रहा होता. और दूसरा ना एक बहुत important चीज़ जो what we wanted to just, not really clearly talk about it, but हल्का फुल्का. वो universe की timing. You don't know, when something is going to happen and it will initiate a moment for you, a memory for you. Like उसी वक्त लाइट क्यों ठीक होनी थी जब उसने ओल्ड लेडी को क्रॉस करना था और वो ओल्ड लेडी हैंड्स हिम अ फ्लावर. ये मोमेंट क्यों ऐसे होना था? जस्ट ट्राइंग टू एक्सप्रेस के थोड़ा सा ट्रस्ट ना यूनिवर्स की टाइमिंग पे होना चाहिए. You never know who is actually, without knowing, trying to make it work for you. So that guy who was trying to fix the light, उसको भी नहीं पता कि he is creating a moment for you. He's an instrument in that. Yes. So जो बात भी है ना, यूनिवर्स conspires in your favor. तो यूनिवर्स जिन कैरेक्टर्स को भी यूज कर रही होती है उनको भी नहीं पता होता कि दे आर मिल के दे आर हेल्पिंग द यूनिवर्स वर्क इन योर फेवर. सो बस यूनिवर्स के प्लान को ट्रस्ट करना बहुत जरूरी है. सो इट वाज जस्ट ट्राइंग टू से दैट बिकॉज in a way Jafar is also saying that, क्योंकि हमारे अंदर भी यूनिवर्स ही है ना यार. We are a universe and we are the universe because we are made from the same materials. So जो कायनात सोच रही होती है, कर रही होती है, क्योंकि हम भी कायनात का पार्ट हैं, तो हम इतना डिस्कनेक्टेड नहीं है उसकी डूइंग्स से, उसकी हैपनिंग्स से. हम भी उसी का हिस्सा ही हैं, उसी तरह एग्जिस्ट करते हैं. मटेरियल भी हैं, फीलिंग्स भी हैं, सोल भी है. यूनिवर्स की भी सोल है, हमारी भी है. सो कुछ मुझे फर्क नहीं लगता अपने आप के अंदर ढूंढना या यूनिवर्स में ढूंढना. मुझे एक बात लगती है. That was So तो बस विजुअल के लिए मुर्जी हैज ऑलवेज बीन a partner in crime for a long time. From the very early days of EP and Call, मेरे वो bands, उस time पे भी he used to run a social media, समझ लो, website platform for promotion of Pakistani music. So he has been a long supporter of that. So जब बहुत काम लोग करे तो उनमें से मुर्जी was one of them, मुर्तज़ा नियाज़. And पाक मीडिया रेवोल्यूशन नाम है. अभी भी उनका blog is there and his wife now is handling that. So that's also beautiful. And their whole aim intent has been, अभी मैं आपको बात बता रहा हूँ 2006, 5, 7 की टाइम की. So it has been more than a decade के कब से ये हो रहा है.
So since those times, मुर्जी की इंटेंट, मुर्जी की एवोल्यूशन, ग्रोथ तो मैंने साथ साथ देखी और साथ साथ हुई है हमारी ग्रोथ. नेस्कैफे बेसमेंट में मुर्जी हैज बिन द डायरेक्टर ऑफ द सीजन 3 के अलावा. And season 4 Wow. 5 tak, from 1 to 5 you can also see his growth and evolution of where Yeah. we were making our teams 5 bigger. was, yeah. Production designers, art directors were coming in, we were shooting it cinematically. So वो जो उसकी evolution है ना, वो बहुत ज़्यादा in a way हम सबकी evolution है, क्योंकि इकट्ठे हमने grow किया है visually भी और conceptually भी. And Muzi has been instrumental in my life in so many ways. A lot of the visual aspect of Coke Studio season 14, before we started it, so those ideas, that every story should have its own world, those Yeah. ideas stemmed from discussions with Murzi. Oh, wow. Yeah. So he has been a sort of a consultant for everything, even if when he's not directing. He's the person even when there is a song, किसी point पे एक पहुंचता है, तो he has a keen ear for analysis of a song. Yeah, analysis क्या कहूँ, but just he has a keen ear for somehow figuring out के गाने की special चीजें. The soul तो of मैं the हमेशा song. कुछ हाँ. हाँ, soul of the song. But so when I send it to him, so I just ask him what does he feel. So more than 99% of the times he's spot on. He's spot on about things. Yeah. So he's a great person to have to have in the team, and I trust him completely. मतलब blind trust है उसके साथ. बंदा भी बहुत अच्छा. As when I said ना कि इस तरह we're talking about Jafar Maz, so Murzi is same. वही tribe, वही सारा कुछ, बड़ा दिल और मेहनती इंसान. So और मुझसे डांट भी खाता है वैसे. सच्ची बात तो ये. See, I cannot imagine you danting anyone, but okay, you probably you can do. ask him. Okay. But you Wait, ask him. please tell us. And then he will write a book, a complete book. के Please जुल्फी ने मुझे comment. कब डांटा है. I'm asking him, please comment below it. हाँ ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल उससे आप पूछो. लेकिन he's one of my best friends, no doubt about it. So चलता है फिर तो. Yes, आप फ्रेंड्स को ही So, डांटते हो. हाँ वो बिल्कुल होता है. वो भी मेरे साथ एक्सप्रेसिव है, तो that's how it is. और उसके साथ हर प्रोसेस ना मैं इस तरह मतलब मैं हमेशा whenever I'm going in a process with him, I always have the confidence that at the end of the day it's going to turn out special. It's going to turn out great. He will be taking care of all of these things, the way the story has to be told. He's a good team builder as well. कि अच्छा इस narrative के लिए हमें, for example, आमिर मुगल चाहिए. He's the right person. हमें इसकी world building के लिए ये लोग चाहिए. Production designer ये चाहिए. So he has that, kind of knack of picking the right team as well. It's always great working with him. And even the idea of the old woman with the flower and the light, ये जो सारा भी हमने बात की इसके बारे में कि लाइट उसी मोमेंट पे ठीक हो जब वो क्रॉस करे उन्हें, कि वो उसमें भी आपको होप मिल सकता है. So all of those ideas, it came from him. This idea came from him. People loved her presence in the video. Beautiful idea. बिल्कुल. Beautiful idea. So Murzi has been instrumental in my journey, in Yaara's journey. Yes, बिल्कुल. और बाकी भी सारी टीम यार, हाशिम तो आपको पता ही है. We've talked about it so many times. He contributes with his soul. Umar Bhatt is another, I feel. Yeah, Umar Bhatt is also great. And he's somebody who's growing, who's evolving and doing more work. And even if Umar Bhatt के साथ भी अगर आप conversation में बैठोगे तो he has so many stories to tell. So many things to express. And I feel खैर हम सबकी जर्नीज ऐसे लगता स्टार्ट ही हुई हैं, लेकिन अभी उमर बट हैज अ लॉट मोर स्टोरीज टू टेल. और मुझे यकीन है कि ही इज गोइंग टू बी वन ऑफ दोस पीपल जो आई फील प्रोडक्शन डिजाइन में डाइवर्सिटी लाएगा. इफ ही कीप्स एट इट, इफ ही कीप्स एट इट एंड कीप्स ग्रोइंग. या सो ही इज दैट माइंड. सो या ग्रेट टीम ऑलवेज. What a beautiful energy to be around.
all these people. Oh yes, yeah. वो आप BTS में देखते ही होगे कि सब कोई एक डिफरेंट लेवल पे कनेक्टेड है चीज के साथ। जब बातें भी कर रहे हैं, Yeah. कन्वर्सेशन भी कर रहे हैं, तो वो लेवल और है। और मैं भी जब व्हेन आई टेक अ लुक बैक एट ऑल ऑफ दीज थिंग्स, तो मैं भी सोचता हूँ यार कि वाह, क्या डीप कनेक्शन सबने बनाए हैं इस पूरी चीज के साथ। खुशी होती। You know, the one common thread I am hearing in all the stories you've told me. Oh, I wasn't even going to phrase it like this, but it's that a lot of people that are your tribe and that you work with are people who have many stories to tell. Oh yes, that is so true। और बस उनको वही है कि आप बात करो तो उनकी स्टोरियां इतनी बाहर आती हैं, Yes. तो पता चलता है कि इंस्पिरेशन की तो बड़ी ब्रांचेस बन सकती हैं, इतने लेयर्स बन सकती हैं कि वो क्या क्या नहीं अभी बात बता सकते। Yes. बस यही बात है। दिस इज द होल थिंग। मेकिंग द राइट टीम actually means के the people that you are getting on board has stories to tell, they have stories to tell। और They've वही lived a आई life. थिंक, Yeah. हाँ, ताकि वो प्रोसेस को ड्राइव कर सके ना, Fully. प्रोसेस में Yes. कंट्रीब्यूट कर सकें। अदरवाइज हम सब एग्जीक्यूट करने पे लग जाएंगे चीज को। सो मुझे तो लगता है एग्जीक्यूट तो उस वक्त होती है कि जब वो फाइनल, बस जब रिजल्ट आ गया ना, एडिट हो गया, तो तब वो ठीक है, वो एग्जीक्यूशन में तब चली गई। खैर एडिटिंग भी एक बहुत एब्सोल्यूट क्रिएटिव तरीन जॉब है। लेकिन मैं वैसे बात कर रहा हूँ कि जब आप शूट भी कर रहे होते हो, तो उधर भी इतनी चीजें दिमाग में आती हैं कि नहीं यार इसको ऐसे कर देते हैं, नहीं यार इसको ऐसे कर देते हैं, इसको ऐसे कर देते हैं। तो वो उसी वक्त आएंगी ना जब कहीं ना कहीं से कोई मोमेंट इंसान अपनी कहानी से कनेक्ट कर लेगा और आइडिया दे देगा। सो वो स्पेस मिल जाती है ना सबको कि बोल सकते हैं, बात कर सकते हैं कि हमारी आवर स्टोरीज मैटर। तो टीम ऐसी बनानी चाहिए कि वन, दे हैव स्टोरीज, और सबके पास ही होती हैं, बस उनको थोड़ा झंझोड़ने की जरूरत होती है। एंड टू, दे वांट टू एक्सप्रेस बिकॉज दे फील कि दिस इज देयर सेफ स्पेस। सो ये दो काम करने बहुत जरूरी होते हैं टीम बिल्डिंग में। टीम बिल्डिंग, और फिर जो आपने उनको एनवायरनमेंट प्रोवाइड करनी है, सेफ स्पेस। आई लव दैट यू सेड कि अपनी स्टोरी से कुछ कनेक्ट करके फिर वो ऐड करते हैं, बिकॉज कोई टेक्स्ट बुक फॉलो नहीं कर रहा है, ना ही सेट पे, ना ही जैम रूम में, नहीं कर रहा। बिल्कुल शुक्र नहीं कर रहा है। अगर टेक्स्ट बुक फॉलो हो रहा होता तो इस टाइम पे बहुत लोग कर रहे हैं मैं बड़ा वर्ल्ड में। नहीं, वो कर रहे हैं, लेकिन मैं कह रहा हूँ हम शुक्र के वो जो आप टेक्स्ट बुक की बात कर रहे हो ना, फार अवे फ्रॉम दैट। एंड वो उसको रैंडमनेस कह लें, कुछ कह लें, वो है ऐसी, लेकिन दैट्स व्हाट वी हैव गॉटन यूज्ड टू एज वेल। यस। No, but beautiful. The entire visual depiction of this song was just so beautifully in touch with the soul of the music. That it really, like, we were trying to unravel and figure out iska kya meaning tha, uska kya meaning tha. So even all the little elements on the set, even like showcasing an instrument like the Baluchi banjo in the video, which was to appear later, by the way। yeah, या वो later टुरी चांदी में वही जो आपके थे हमारे नसीम, वो अपने बलोची बैंजो के साथ इन टुरी चांदी वाज देयर। सो वो एक तरह से ईस्टर एग भी थे, लेकिन वो जो आर्ट स्ट्रीट, जो बस्कर्स की स्ट्रीट आप समझ लें, तो वो दैट आल्सो वी वांटेड टू शो कि इट्स आल्सो पाकिस्तान, but it's also kind of a dream कि okay, there is a space like this where there is an artist, where there is a musician, different art forms thriving, and all of them are together. People are getting together to hear a performance, by a band जो होता है स्ट्रीट्स पे, बस्कर्स। हाँ, सो वो सारा। और लॉट ऑफ द, खैर ये पता नहीं मैंने आपको बताया हुआ कि नहीं। सो 2018 था या पता नहीं 17 था, अब याद नहीं आ रहा मुझे। आई वाज इन प्राग। सो प्राग में ना देयर वाज दिस पॉइंट जहाँ से वेयर वी वर स्टेइंग। सो एक ना क्या कहते हैं, वो टी सा जो बन जाता है कि जिसमें आप एक पॉइंट पे पहुंचते हो तो आपके पास दो रास्ते होते हैं, आप वाई कह लें या टी कह लें, कुछ भी जाने के लिए ना। सो अभी डिस्कस्ड इट जब हम इसका विजुअल कॉन्सेप्ट फिगर आउट कर रहे थे ना, स्टोरी। सो ये वाली चीज हेल्प्ड अस टू फिगर आउट पार्ट ऑफ दैट वर्ल्ड। मुर्जी के साथ डिस्कस कर रहा था। मुझे वो याद है कि एक मोमेंट था कि एक जगह पे आके ना, एक तरफ चार्ल्स ब्रिज थी, राइट, और एक तरफ देयर वाज दिस बैंड हु वाज preparing to perform, right? So I remember that I took the way which went to Charles Bridge, because the bridge was there, the history was there. Yeah. There was this
samundar and the sound of that samundar. And then there were these musicians here and there, buskers, violin players, cello players, hang drum players. There were stories, टक टक टक, और वहाँ वो दूसरी जगह पे बैंड प्रिपेयर कर रहा था. And it was so I actually captured so many of those moments, but वो मेरे पास डेटा डिलीट हो गया. उसमें भी क्या खैर मोमेंट्स थे. Anyhow, but वो idea of choosing what path, a different path, कि मैंने जरा इस टाइम पे I want to walk alone somewhere, go somewhere, be with myself, even if there are things around me, but I'm just being with myself, because through these stories I am trying to figure myself out. और वो मेरे लिए वाकई बड़ा therapeutic था वो moment. Cathartic. So I just told that story to Murzi as well. So then Murzi, internet I think connection unstable. आ रही है मेरी आवाज? नहीं आ रही. Can you hear me? Yeah. आ रही है. So वो मेरे लिए हाँ moment was special था. So I just when we were discussing the idea for वो Yaara of choosing a certain path and just going somewhere else, I told that to Murzi, and Murzi said that maybe that can be the essence of the whole thing. Okay, when Hannan has two ways to go, he chooses to go somewhere else because maybe he finds solitude there and he's not looking for hope, but even there he finds hope. Yeah. He was not expecting it, right? So anyhow, मैंने कहा वैसे मुझे याद आ रहा ना आहिस्ता आहिस्ता बैठ के जो बातें हुई, गुफ्तगू हुई, क्या क्या हमने स्टोरीज शेयर की. यही बात है सारी कि आपने कहानियां स्टोरीज शेयर करनी है और वो फिर किसी ना किसी तरीके से छोटी मोटी और कहानियों का हिस्सा, हिस्ट्री का हिस्सा बन जाती है. क्या बन जाएगी आपको नहीं पता होता. Yes. नहीं पता होता. A moment that you lived in the middle of Prague has now come into a video of a song that's अपने तरीके से. Yeah. अपने तरीके से और ये भी नहीं कि वो जो मेरा मोमेंट है वहां आ गया. आई फील के so many of us have taken different paths in our lives, even physical, कि आपने कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना, right? It's just a reminder to that. So maybe I just had to drive Murzi in a certain direction to think like this, कि जरूरी नहीं है कि कि if Hannan is going on a path and he hears music and he says okay, I want to go there, maybe he says no, I don't want to go there. I just want to be with myself. I want to go somewhere else right now. Because जो भी वो मैसेज इतना पावरफुल था कि उसको एंड तक मिल गया, वो तो सबने देख लिया जब वो हम करता है. So he even didn't have to be there to understand or be कि हाँ बात तो ठीक कर रहा है काविश. No, then it would have become more preachy. Yeah. So you choose your path. If the message has to reach you, it will reach you. I agree. So that is, yes, it will reach you and you will not be able to stop it. So that was the whole idea. Okay, surrender, my friends. Surrender and let life happen. होने तो देना यार थोड़ी देर, होने तो दें. Yeah. But it was beautiful because when he entered that quiet lane, I kind of in that moment followed him and I was like, yes, I would also probably have picked that. And it was very beautiful because he was walking past someone who was making a painting. He was walking past a lot of things. And it's like it was so beautifully picturized that there is so much goodness around us and yet we build our walls and block ourselves from it. Oh yes. But if despite us doing that, the universe despite us doing that, it'll come yes, it will come and get you. and it'll borrow the message. सही बात है. And you won't be able to do anything. बस वो जो पहुंच जाएगा फिर आपको कहोगे अब यही है. यही करना है, कुछ और ही सकता. So खैर. I love it. End में हम संभल जाएंगे. और क्या यार, थोड़ा सा बिलीफ, फेथ हो बहुत जरूरी है हम सबकी मेंटल हेल्थ के लिए भी. थोड़ा सा नहीं, बहुत ज्यादा, क्योंकि हम ले लेते हैं चीजें जब बहुत ज्यादा ना इस तरह के नहीं कुछ ठीक हो सकता. मतलब लैक ऑफ होप जब पार्ट ऑफ लाइफ बना लेते हैं तो वो डेंजरस जोन है. तो बस जस्ट कीप होपिंग. एंड ये सच्ची बात है कि यू आर नॉट अलोन. आपको लग सकता है अपनी लाइफ के कुछ हिस्से में कि यू आर अलोन. मुझे भी बहुत दफा लगा कि आई एम अलोन.
बहुत दफा लगा है, ये इंसानी फितरत है। Yeah. बट आप थोड़ा बिलीफ के साथ ना चलते रहें अपनी इंटेंट के साथ, तो आपको नजर आएगा कि उफ यार मैं कितना बेवकूफ था, मैं सोच रहा था आई एम अलोन, नहीं हूँ भाई मैं। Yes. Yes. Same there. तो बस वो होप भी एक टेस्ट है, आसान तो नहीं है, होप करना आसान नहीं है, ये भी हम सबको पता है, इट्स नॉट इजी टू होप, बट इफ यू समहाउ कैन यू नो ना छोड़ आस की डोर को तो ना छोड़ो आस की डोर को ना, वो डोर का सिरा ही क्यों नहीं है, थोड़ी देर होल्ड ऑन टू इट, यू डोंट नो वेयर इट विल लीड यू टू। मैंने यही किया अपनी लाइफ में ज्योति, वो होप का सिरा भी क्यों ना हो ना, मैंने सोचा कि यार मैंने लूज नहीं करना होप, और फिर लाइफ हैज शोन मी कि वो रिवॉर्ड करती है आपको जस्ट फॉर सरेंडरिंग एंड बिलीविंग इन इट। Life is coming through you and not at you, and that takes time. I love. Yes. I love. I want to end this by one more beautiful comment from a viewer, which I think you need to hear. It says, "Oh Yaara is this season's Mehram moment, just as soul stirring, and infuriatingly just as short. Xulfi is purposely torturing us." I thought that was hilarious. It is hilarious, but I'm not purposely torturing you. No, not You're at not. all. Yeah. Trust me, yeah, I'm not. Yeah. I'm I also think just you trying know. to figure out, yeah. I'm also trying to figure out things, ways to do things, trying to understand. So, मेरे लिए ना बिगिनिंग और एंड्स आसान नहीं है। टू द पर्सन हु हैज रिटन द कमेंट, मुझे कभी-कभी मैं कंफ्यूज भी हो जाता हूँ बिगिनिंग्स और एंड्स में। सो फिर साइंस आपको हेल्प करते हैं, फिर आपको सरेंडर करना पड़ता है, एंड यू नो यू हैव टू लेट द जर्नी हैपन थ्रू यू एज ज्योति जस्ट सेड। सो टॉर्चर तो मैं सोच भी नहीं सकता। आई एम इन लव विद द पीपल बिकॉज आई नो दैट एट द एंड my personal narrative or aim is also to help people heal and feel. So for me, I just want कि अगर मेरी एफर्ट का कोई पार्ट, मेरे आर्ट का कोई पार्ट किसी की ज़िंदगी में कोई पॉजिटिव या कोई ऐसा थिंकिंग चेंज लेके आ रहा है जो उसकी हेल्प कर रहा है, मेरे लिए ये सब कुछ है। मेरे लिए ये सबसे बड़ा रिवॉर्ड अवार्ड है जो यूनिवर्स ने मुझे दिया। सो माय एम इज़ टू हेल्प। And you have helped all of us. I'm trying. Honestly, I'm trying. Beautiful. Thank you so much for Thank this you, song. Jyoti. And Thank you for this for conversation and for helping everything else everyone as well. heal. I love Thank it. you. Sab संभल जाएंगे. Don't worry, guys. Just live this. Don't worry, guys. सब संभल जाएंगे। ये बात ठीक है। हाँ, तो कह दिया अब काविश ने, अब संभल जाएंगे। Yes. And we can't wait to hear Abdul and Kaavish perform this live to wrap up in Abdul's Yes. words. Hopefully soon. He can't wait to perform this live. We can't wait to hear it live. And some people will get to experience that. So yay. Thank you. Yes. Thank you for this. मैं तो खुश हूँ बात करके, और actually just going down that path again of the process is also helping me in unknown ways. कभी-कभी जब आप स्टोरी वीव कर रहे होते हो, फिर आगे बात चली जाती है, स्टोरी लोगों की हो जाती है। फिर जब आप रिमाइंडर आपको मिलता है ना कभी-कभी, तो उसके अंदर एक कोई न्यू मैजिक भी आपको उसमें दिखाई देता है। सो मुझे मिल रहा है न्यू मैजिक इन सारी कन्वर्सेशंस में, एंड इट्स हेल्पिंग मी कार्व माय नेक्स्ट जर्नी एज़ वेल। Yeah. सो शुक्रिया ज्योति। थैंक यू। You're welcome. I can also. Thank you, Xulfi. This was amazing. Thank you. We're gonna keep the series going. There has been a Yes. pause before this one. And there will be pauses as and when it's not possible to record. So don't worry Yes, about it, yes, guys. Xulfi has promised there will be that pauses. the whole season will be done justice to. So Yes, yeah. वो प्रॉमिस है मेरा, सबसे प्रॉमिस। yeah, so this shall continue, and chal chaliye,
चलते हैं। चलिए चलते हैं। ओके, Long and बाय prosper. बाय, बाय बाय। Thank you.